ओके हेलो एवरीवन सो अभी हम लोग थोड़ी देर वेट करते हैं. लेट्स वेट फॉर 1 or 2 more minutes फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन एंड देन वी कैन स्टार्ट. ठीक है. एंड इन द मीन टाइम लेट्स. ओके. हेलो हेलो. हेलो आनंद. हेलो मानी. या. हेलो हेलो. हाय पीयूष. हेलो रोहिणी. इन द मीन टाइम जब तक और लोग ज्वाइन कर रहे हैं, लाइक फील फ्री टू add up your questions. Or one more thing, like in this entire session I request you all to kindly make your pen and paper handy so that like जो भी doubts होंगे or anything you found useful from this session, please make a notes of them. Otherwise हम उसे कल के खाने की तरह भूल जाएंगे. So it is always better to keep up the notes. Good afternoon. Hi Surjit. Good afternoon. Let's just wait for 1 or 2 more minutes and then we can start. Yeah, sure. I'll try to keep this session as much possible in English. But yeah, but maybe possible for giving some examples might be possible using in Hindi. But yeah, mostly I'll keep it in English. Yeah, it will be Shivam. Yeah, definitely it will be for beginners. I'll be covering from the right from the begin to up to the advanced level. So yeah, feel free. And in the end, I will also cover the right now the today's very hot topic, that is a recession and how you can overcome it, like how you can find the opportunities for yourself in that recession time, and what are the various other ways to keep up to the mark or up to the trend in the industry so that you will not be get affected that much from that recession. So yeah, it will be for all. No issues. Yeah, for the DevOps as well, we require a somewhat kind of DSA, not up to that advanced level, but yeah, basic DSA is still required. Okay, so Sujit, it's a StreamYard we are using, and I think screen sharing is quite good in StreamYard. So definitely you can try it off. Okay, let's wait for 1 more minute. उसके बाद start करते हैं. Definitely, Hussein, we will try to cover this point as well, like how to apply for Amazon or any other company and get shortlisted. Like what are the various points you should keep in mind while preparing the resume. Okay, it's 1:08 already. Just let's start now, I think, because otherwise it will be uh, unfair for the students who joined on time. Okay, definitely, Sunny, I'll cover this point. Like, if you are from the firm first year or second year, what should be the ideal way for you? Like, you should focus on DSA or on the web development. Definitely, I will cover this point. That's a really good question from your side. Okay, important tips for interview. Definitely, I'll cover that one as well. Like for the interview, what are the like how what are the simple hacks you can do to just outstand from others? So yeah, I'll also cover this point. But okay, let's start from the beginning. Perfect. So
Hello everyone. Before starting this session, I would like to introduce myself for anyone who doesn't know me. So I am Harshit, and currently I am a software engineer at Amazon, working in their also returns team. Also, I have a previous experience of interning at Airtel, and I joined as a full time there as well. So, in this entire session, we will be covering a lot of concepts or nuances around the DSA, like how you can start DSA, how you can solve the questions more efficiently, what are the ways in which you can outstand yourself in the interviews, and in the end, we will also covering like the today's trend currently situation, that what's the impact of recession in today's industry and how you can overcome it to reduce its effect on yourself. Okay, so we'll be starting right from that, from the basics, and go up to the higher trends. Okay, so yeah, in between I will pick up your questions, so definitely feel free to add up your questions in the comments, and yeah, I will pick up in between. Perfect. So before starting this session, key how you can start preparing for DSA if you are from the first year of the college, if you are from the second year of your college, or no matter if you are from other field and you want to make a switch to the IT sector, how you can start the DSA. But before starting that point, ki DSA कैसे करना है and how you can start it, I just want to tell you like why you want to do DSA. क्योंकि आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव अ कॉमन डाउट कि इंडस्ट्री में हमें करने प्रोजेक्ट्स हैं, वी हैव टू वर्क ऑन डिफरेंट स्टैक्स, वी हैव टू वर्क ऑन मे बी ऑन रिएक्ट और ऑन जावा और ऑन पाइथन और ऑन सम अदर टेक स्टैक. सो व्हाई डू वी लर्न DSA? What's the use case of DSA, right? So basically you can consider it as by considering an example. For example, you went for a restaurant and you have a menu over it, right? So what you can do, what you do is ki you just simply search your menu, you just search the entire menu ki this had this, that, and that, and that, this is in the main course, this is in the starter, this is in the dessert, right? And then you usually basically you just do a linear search and search for your favorite dish from that entire menu, right? So if you are for example, if you are a complete beginner, right, and if I give you for example a dictionary and ask you to find a word, for example Harshit, right? So if you are a complete beginner, what you will gonna do, you will just search it by a page, right, by one, and it will take a lot of time, right? But since we already know about the fact that in the dictionary we have all the words in a sorted order, right, then you will directly jump onto the page from where the words starts, right? And then you can move with the H. Now I have to look for the HA, right? In this way you will find the entire word pretty quickly. So what is it? This is nothing but just you have applied the binary search, because you already know the words are in the sorted order. You reduce all the words from A to H, and then you will be start proceeding forward from the H, right, from the H to HA, and then you will move forward the HAR, right? So that is the basically the use case of DSA. Still you have at the end you have to use different text text, that's right. But to achieve that any particular task, what is the efficient way? डिक्शनरी में वर्ड सर्च करने के लिए तुमको है अपने हाथों का यूज करना था, डेट इज फाइन, यू हैव टू गो थ्रू दैट एंटायर डिक्शनरी. बट व्हाट इज द आइडियल वे, व्हाट इज द बेस्ट ऑप्टिमाइज्ड वे? You have already skipped all the pages from A to H and then you have moved forward, right? So in the similarly in the field of the no matter you are working on any product based company or in any service based company, or no matter whatever you are doing, to do something efficiently you require DSA. Okay, so basically this is the only thing, like DSA is nothing but just a problem solving for you, like it will help you in solving the proper problems more efficiently or in a more optimized way. Okay, so now coming on to the very basic question, like bhaiya, I am from a first year college, I am from the second year of the college, and I don't know from where I should start the DSA, right? And basically these are the things which comes in the student's mind when he or she just make a switch from any other field, or he just when get basically starts into the field of DSA or coding or in the IT sector, you can say, राइट? तो हम लोग करते क्या है, टू स्टार्ट द DSA बेसिकली व्हाट यू रिक्वायर्ड इज द फर्स्ट हैविंग अ कमांड ओवर एनी लैंग्वेज,
प्रॉब्लम सॉल्विंग है, डीएसए क्या, प्रॉब्लम सॉल्विंग में तुम्हें अगर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, एटलीस्ट यू रिक्वायर्ड सम लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर, राइट? तो टू स्टार्ट द डीएसए फर्स्ट यू शुड नो एटलीस्ट अ गुड लैंग्वेज. अब गुड लैंग्वेज क्या भैया, हिंदी इंग्लिश? नो, नॉट हिंदी इंग्लिश, बट द C++ और जावा और पाइथन, right? So the basic question that comes from a beginner's mind is ki, which one I choose, either the C++ or I should go with the java, or should I go with the python or any other language? So if you ask me, I'll always suggest you to go with the C++ or java. So why am I saying to with the C++ and java? Because see, if you want to go from one place to the another, right, there are thousands of ways, right? But उसमें कुछ ways होंगे that will be the easier one, कुछ ways होंगे जो थोड़े से difficult होंगे, but it was not like कि वो कोई रास्ता ही नहीं है, right? So I am suggesting everyone to use C++ and java, because there are ample of resources present out on the internet. And once you're starting you want someone जो कि तुम्हारे साथ रहे, right? Like for example, if we just started into driving, we want someone to sit beside us who will tell me like कि कब तुम्हें रेस पे पैर रखना है, कब तुमको क्लच दबानी है, right? We want someone to assist us. So that's why I'm saying कि it is always good to start with java or C++, because there are ample of resources present out on the internet. So if you stuck somewhere, you will get the help even from that from the C++ or java community. And now the point comes कि भैया अगर मैं पाइथन कर लूंगा तो पाइथन बेकार है क्या? No, python is not bad, but python already has a lot of inbuilt libraries, right? So from the start, if I'm saying, I'm suggesting not to use python, because of the fact that it has a lot of inbuilt libraries, because of which you will not going to get the deeper information of the like inbuilt library, how they are working. For example, sort function hota hai, right? So sort function is something which is also present in C++, but there are a lot of other inbuilt libraries that are also present in python, because of which a student doesn't get deep dive into that into those inbuilt libraries ki unki working hoti kaise, right? But अब आज के टाइम पे python also has a very big community, and it also has a very lot of resources present on the internet. So if you want to start from the python itself, you feel free to start. Okay, and once you learn any language, it is very easy to switch to other language. So basically the point is कि अगर तुमको एक तरह की कार चलानी आ गई, then it is very easy to switch to other car or other motor vehicles, right? So similarly in the case of the languages as well. Okay, so okay, let's read out some comments in between. Okay, how to apply for me? Okay, I'll pick up this question. Please tell, okay, which programming language to choose? Karthik, I already told you, like you can start from the C++ or from the Java, or if you want to start from Python, that is also fine. But yeah, but please make sure to deep dive into that or to deep dive into the all inbuilt libraries that are present in Python. Okay, what is DSA? DSA is nothing but just, you can say, a kind of a problem solving ways in which you can just solve a problem, any problem, more efficiently or in a more optimized way. By the optimized way, I just meant to do that particular task in a reduced manner. The best examples of it is to search in a dictionary, right? Like if you are completely new and you haven't go through the dictionary, you will find कि तुम्हें एक एक पेज करके उसको सर्च करना पड़ेगा. But if you are already a good person, you will just simply skip all the pages and directly jump onto the main page. Okay, please detect the roadmap of I didn't got your question. So I'm second year student. What should I do? Should I focus on DSA? Okay, that's a very pretty common question among all the students, that whether you should go for the DSA or the web development. Definitely, I'll pick up this question. Definitely. What that choose between Java and C++ suggest from your side? Okay, Karthik, I suggest you to start with the C++. That is fine, because in the C++ in the Java, there's just a basic difference of the syntax. So once you start learning C++ and solve pretty good amount of questions, then if you want to choose like कि अगर मुझे C++ में मजा नहीं आ रहा, I just need to switch from Java, then you can switch easily.
So yeah, the only issue is in the start that it might take some time to start in the beginning, but later you can switch very easily. Yeah, Sunny, if you have started complete, if you have already started in C++, I recommend to start solving the questions in DSA. Yeah, I suggest you to start solving the questions in C++ itself. You providing? Yeah, yeah, certificates will be provided to everyone in the end of that session. No issues. DSA like what? Data structures and algorithms. Answer: firstly, learn a language or a DSA. Piyush, I suggest you to learn a language first, and then you can proceed forward, because DSA is just the problem solving, and the problem solving you require at least a language to solve that question, right? To solve that problem. So to solve that problem, you require a language, and the language is simply the C++, Java, Python, and Golang, and SQL, and a lot of. Tell me one thing. I applied a lot of companies on Knock and LinkedIn, but there is no response from any side. What is the reason why resume not? Okay, Aditya, this is also a very pretty common. That's a nice question. That's a problem from a lot of students. So I'll be picking up that as well in the end, definitely. Okay, so far we have covered like which language to choose, and I hope this have already cleared your doubt ki which language we. I think this cover up your doubt ki which language you should start with any language you want, but definitely go with the language of C++ or Java, I suggest you. But if you want to use with the Python, go with the Python as well, no issues. Okay, just wait for a while. Let me go through some more questions. Can you explain what type of DSA questions asked in interview? Definitely, I'll be covering this in the DSA. Once I'll be giving you the roadmap, I will definitely cover up this question. I already complete. Should I start DSA? Yeah, Sunny, I already answered your question. You can start. If you have already covered the C++ and OOPS concept of it, you can start DSA in C++ as well. Okay, now coming on to the basic of the DSA, like how now so far you have learned a language, means you have already started, you already learned that how you can communicate or how you can write the code to solve the problems, right? So far you learned the language. Now comes the pretty important part कि अब problems आने वाली हैं. वी हैव लर्न, लाइक मुझे बोलना आ चुका है, लेकिन अब मुझे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, राइट? इन द स्टार्ट हम लोग करते क्या है, इफ यू जस्ट कंपेयर फ्रॉम योर सेल्फ, पहले हम लोग बोलना सीखते हैं, राइट? जब हम लोग बोलना सीखते हैं आर नेटिव लैंग्वेज, देन वी स्विच टू अदर लैंग्वेजेस, राइट? तो वही वाला सिंपली वाला पॉइंट है कि यू कैन स्टार्ट विद एनी लैंग्वेज और योर नेटिव लैंग्वेज और वट एवर लैंग्वेज यू फाइंड easy, and then you can switch to other one. Okay, now coming on to the basics of DSA, like how you can start, or anyone who is new to this field can start in DSA. So basically what DSA is just the number of ways to solve the questions efficiently, right? So there are number of data structures present out. For example, it is array, it is strings, it is trees, linked list, stack, queue, DP, graph, right? So there are number of data structures present to solve those questions. But now the questions comes is ki from where I should start, क्योंकि already there are a lot in numbers. From where I should start, right? So if you are completely new to this field, I always suggest to start from the easy one, right? एक example लेते हैं. For example, if you are just start learning driving, and if I just put you inside a traffic की ये traffic, अब तुम्हें यहाँ पे गाड़ी चलानी है, you will end up having lot of stress, you will ended up having nervous, and most probably तुम गाड़ी कहीं पे लड़ा दोगे, right? Most probably you will ended up having some accident or having some road rash, right? So directly हमको ट्रैफिक में नहीं जाना. From where we will be starting from the complete empty road. यहाँ पे सब कुछ खाली होगा, right? We will be starting probably from the an empty ground, right? So similarly in the case of DSA, don't directly jump onto the advanced DSA concepts. Start from the very basics. The very basics concepts of DSA are just to start covering the array, and after the array you can start solving string questions. In the array itself there are a lot of type of subtypes of arrays as well, like उसमें बहुत सारे questions होते हैं कि there is the cadence algorithm, there is prefix sum suffix sum algorithm, there is a two pointers algorithm, right? So ये approaches ऐसी होती हैं कि in the start it is something that will not come into your mind automatically, वो चीजें नहीं आती.
You have to start learning those concepts and then solve questions around it. And once you solve 10 to 15 questions of that similar topic or the similar subtopic, then it automatically comes up into your mind whenever you see any such problem again. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुमने अभी सिर्फ एरे से स्टार्ट किया एंड यू जस्ट हैव बम्ड अप टू द कॉन्सेप्ट ऑफ टू पॉइंटर्स, एंड यू नो कि टू पॉइंटर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग दो पॉइंट बनाते हैं, मे बी एट द प्रेजेंट, मे बी इन द स्टार्ट ऑफ द एरे, सेकंड इज एट द पॉइंटिंग एंड ऑफ द एरे, और या फिर वो एक साथ भी पॉइंट कर सकते हैं. एंड यू गोटा नो कि ओके दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस जहाँ पे मुझे या तो टू पॉइंटर्स से कुछ कंपेयर करना है, या मुझे किसी चीज के दो पॉइंट्स के बीच का कुछ भी निकालना है, एरिया निकालना है, लेंथ निकालनी है. And to find that optimized one, I am using the two pointers. तो उस टाइप के क्वेश्चंस में जब भी तुम उस टाइप के 10 to 15 क्वेश्चंस लगा लोगे, then automatically if 16th or 17th question if someone else will give you, it will automatically bump up into your mind कि okay in these types of questions I'll be using two pointers, right? So do not directly jump onto the advanced data structure. Start with the basic concepts of array, and then you can directly jump onto the strings, because strings is nothing but just a similar with that array. And there's a few different concepts present out in the strings as well, but these are pretty easy. So that is why start with the basic DSA array, strings. Okay, and then after once you learn about the basics of the array and string, you can directly jump onto the further DSA concept or the further data structure, that are the stacks or queues. Okay, so basically what happens in stack and queue, देखो ये since it's a master class, I'm not going to tell you each and every nuance of every data structure. I'm just telling you the way, like you can do each and every data structure in this way. And then if you will be like, if you want कि भैया इस वाले particular data structure को cover कर लो, then we will covering up in the next other in other sessions. But since it's a master class, it's just about the, I'm just telling about you the way you should follow or the fashion you should solving up these questions or picking up the particular data structure. Okay, so once you complete with the array and strings, you can just bump up to the stacks and queue. At least try to solve 15 to 20 questions of stacks and queues, because they are pretty similar questions. And even nowadays stacks questions are coming up into the usually in the online assessments round, or maybe in the possible like an interview will gonna ask you. And queue, to be very honest, stacks and queue are something which will going to help you in other data structures. Like for example, if you just come जब मैं आगे बात कर रहा हूँ एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा हूँ, लाइक ऑफ द ग्राफ और ऑफ द डीपी, देन यू विल नोटिस कि क्यू के काफी सारे कॉन्सेप्ट्स, जो कि क्यू के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम लोग ऑलरेडी ग्राफ के अंदर यूज कर रहे होंगे. So that is why it is now pretty important for us to learn stack and queue before coming on to the advanced data structures. Okay, so far we have covered array, strings, stack and queue. Okay, any question so far? What is most asked questions in interviews? Please tell. Okay, Rohini, I'll definitely covering up in that after that. Once I tell you of every data structure, I'll be covering up this one as well. I'm from civil background, but but I learned SAP. Okay, but my question is, which is best for me, ABAP or DSA? Definitely, you can try out with the DSA. But yeah, if you have already learned A, then try out possible opportunities in your field first. कॉन्टेस्ट देना कब से स्टार्ट करना चाहिए? बिकॉज कॉन्टेस्ट में तो कोई भी डेटा स्ट्रक्चर यूज नहीं होता. करेक्ट. कॉन्टेस्ट के लिए, कॉन्टेस्ट इज समथिंग दैट दे विल नॉट गोइंग टू टेल यू दैट विच डेटा स्ट्रक्चर you will be going to use. You have to figure out, right? And for that I'll tell you like which from when you have to start the concept, from when you have to start participating in contest as well. Okay, so any other questions? Hello, अजय इज आस्किंग, हेलो भैया अमेजोन में कैसे हूँ, एसडी में सीपी करूँ या सिर्फ डीएसए पे ध्यान हो जाएगा? होगा डेफिनेटली, आई विल कवरिंग दिस क्वेश्चंस एज वेल. और सब यूट्यूबर बोलते हैं कि डे 1 से स्टार्ट करो. अंकित, इट इज़ ऑलवेज गुड टू स्टार्ट एज प्रटी एज अर्ली एज यू कैन, बट इट इज़ फाइन इफ यू जस्ट स्टार्ट अ बिट लेट, दैट इज ऑल्सो फाइन. लाइक अपना देखो यार, जब जागो तब सवेरे वाली बात है. सो ठीक है, that is fine, but they always suggest, everyone suggest you to start as early, just because you will get enough
time, right? Because everyone has its own capabilities to grasp over the things. Okay, so far we have covered the basic data structures. That is now we so far what we have covered the array, strings, the stack, and queue. Now coming up to the advanced phase. Right now we are just if you think about either it's a graph. Now we are just completely in the middle. Right now we have got the foundation कि अब मुझे छोटी छोटी चीजें पता पड़ चुकी हैं. What are loops? Right now when are you coming proceeding forward for the advanced data structures, you should pre-assume that it's a kind of prerequisite that you should know everything about the loops, right? You should know everything about the basic concept of queues, how queue is working, how stack is working. Right now everything has been covered, right, in the basic part. After that, the next step is to learn recursion. Why recursion? Because there are a lot of other data structures as well. There are trees, there are graph, it is linked list, right? But before even that, I'm suggesting you to learn at least basic concepts of recursion, because all the later data structures are directly or indirectly depending on the recursion. राइट अब होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिकर्शन में स्टार्टिंग में बहुत दिक्कतें आती हैं कि आई एम नॉट गेटिंग द लॉजिक. भैया आई एम नॉट गेटिंग द लॉजिक, लाइक फ्रॉम हाउ शुड आई डिजाइन दिस फंक्शन, व्हाट पैरामीटर शुड आई पास, व्हाट which base case should I maintain, so that in the worst case or as an end case my question will fall into this in the base case and it will return the data. How should I add the variables कि मेरे पास में जो लॉजिक जो फाइनल आउटपुट आएगा वो सही आ जाए, राइट? तो दीज आर द प्रेटी क्वेश्चंस which pretty doubts or you can say the problems that any student faces once he starts with the recursion. To be very honest, रिकर्शन को स्टार्ट करने में स्टार्टिंग में ये दिक्कतें आती ही हैं, and it's not only from your perspective, it's with everyone. So what is the best way? Is the best way of solving such questions is to make a tree. Once you are starting with a very predefined questions, for example तुमने फिबोनाची सीरीज से स्टार्ट किया, or you have started from the staircase problem. So these are the problems which are very already predefined. तुम्हें पता है फिबोनाची सीरीज क्या होती है, राइट? जिसमें पीछे के हमको दो क्वेश्चंस, दो वैल्यूज का सम करना होता है, उसके आगे हम लोगों को नेक्स्ट वैल्यू लेके आनी होती है, राइट? सो व्हाट वी रिक्वायर्ड द लास्ट एलिमेंट and the second last element, right? So you already know about it, right? So in the so my only point is ki whenever you are starting with the recursion, try to keep pen and paper handy with yourself, and before making the function, first try to make a tree of that recursion. यहाँ जिस दिन तुम लोग ट्री बनाने का लॉजिक सीख गए, आधा रिकर्शन अपने आप खत्म हो जाएगा. And to be very honest with you, recursion is the foundation block for the advanced data structures. पूरा का पूरा tree recursion पे based होता है. In the graph you will going to use the recursion. DP is nothing but just the optimized version of recursion. Recursion का ही एक सब टाइप होता है. यहाँ पे overlapping सब प्रॉब्लम्स होंगी, तो और तुम्हारे पास में मिनिमल सब स्ट्रक्चर होगा, तो उस वाले केस में तुम्हारे में डीपी अप्लाई हो रही होगी, राइट? बट उसका फाउंडेशन स्टोन इज व्हाट इट इज द रिकर्शन इन द लिंक्ड लिस्ट इटसेल्फ. whenever you are just going from one node to another node, you will be using recursion. In the linked list you can also use the loop as well, but it is always recommended to use recursion because it helps you in lot other ways. वो कौन से अदर वेज हैं? वंस यू स्टार्ट सॉल्विंग दोस क्वेश्चंस की, एक लिंक लिस्ट में बहुत सारी टाइप की क्वेश्चन आती है, लाइक यू हैव टू रिवर्स अ लिंक लिस्ट, राइट? तो अब रिवर्सल लिंक लिस्ट इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. यू कैन डू इट ईदर बाय द लूप बट आल्सो बाय द रिकर्शन एज वेल. सो वंस यू सॉ इट्स एक्चुअल अप्रोच, तो वो रिकर्शन से बहुत छोटी हो जाती है, राइट? जो क्वेश्चन को तुम्हें लूप से लिखने में बहुत टाइम लग रहा है, इन द रिकर्शन इट विल जस्ट टेक अ कपल ऑफ लाइंस एंड दैट्स इट, right? So at least for that recursion, only for the recursion, I recommend you to solve 30 to 40 questions. I'm not saying directly jump onto the hard questions of recursion, because you will be ended up having demotivation, and you will ended up having like you are not able to build that logic. फिर बाद में वही वाली बात आती है कि भैया मेरे से लॉजिक नहीं बन रहा, मेरे बस की रिकर्शन करना, मैं ऐसा कर लेता हूँ, लिंक लिस्ट कर लेता हूँ, लूप के थ्रू लूप से क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा मैं. You can solve the questions via the loop in the linked list, but और data structures का क्या, वहाँ पे तुमको use करना ही पड़ेगा recursion, right? So start from the basics. If you are not able to build up the logic, ठीक है, that is fine.
coming back to the easy questions. Start from the easy. Once you solve 10 to 15 easy questions, jump on to the medium questions. अब वहां पे medium में first try to solve the questions which are very higher accuracy. By the term higher accuracy, just we just meant कि उसमें थोड़े से edge cases कम होंगे, right? If you have solved the enough questions with higher accuracy, try to reduce the accuracy, because now the point comes is कि overall logic तुमको आने लगा है, but थोड़ी बहुत edge cases missing हो रही है. अगर edge cases नहीं बन रहे, take a step back, right? This is the ideal way. Start from the very basic questions, then try to solve a bit hard questions, but if you are not able to solve, take a step back. ठीक है, फिर वो वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना, फिर देन आफ्टर आगे बढ़ना, right? And I'll be okay, very honestly, let me tell you, like for every question, which how much time you should dedicate to each and every question. So for the easy question, I'm just saying it from that interview perspective as well, ki for that any technical interview you will be having 1 hour, right? So once you think you are capable of building up the logic in 10 to 15 minutes, then you are pretty good with the easy questions. If you are able to make up the logic in 10 to 15 minutes, okay, and rest 5 minutes for your from writing the entire code, okay, so which will total give you a sum of 20 minutes for the easy question. For the medium questions, I'm assuming that you if you are capable of building up the logic in 20 to 25 minutes, and leave the rest of the 5 minutes for the again for the coding part, that is the total sum of 30 minutes for the medium questions, and a sum of total 40 minutes for the hard questions. So if you are capable of solving those questions within the time constraint, देन यू कैन थिंक अबाउट कि ठीक है, अब मैं अपने नेक्स्ट राउंड पे आ सकता हूँ. लाइक अगर तुम इजी से स्टार्ट कर रहे हो एंड यू आर कैपेबल ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस इन 15 मिनट और इन 20 मिनट, then you can proceed forward with the next level of the difficulty. Okay, in the start, don't worry about the timings, very honest, because in the start each and every person takes time. Maybe possible for to solve that easy question, you will ended up taking the 1 hour, right? तो starting के लिए नहीं है ये सब चीजें, but once you cover up all the data structures and you are solving the questions, once you cover all the data structures and you are just now trying to solve the random questions, for that I'm saying कि easy questions अगर 15 मिनट में solve हो रहे हैं तो ठीक है, मीडियम पे जंप करना. अब अगर उसके मीडियम क्वेश्चंस हाफ एन आवर्स में सॉल्व हो रहे हैं तो ठीक है, जंप अप टू द हार्ड क्वेश्चंस. ओके, सो दिस इज ऑल वी हैव कवर्ड, लाइक फॉर ऑल द डेटा स्ट्रक्चर्स. अभी रिकर्जन हमारे पास में फाउंडेशन ब्लॉक कवर हो चुका है. नाउ वंस यू कवर्ड ऑल द फाउंडेशन ब्लॉक, दैट इज द रिकर्जन, जंप ऑन टू द लिंक्ड लिस्ट डायरेक्टली, because linked list is nothing but it requires recursion, right? But it requires the basics of recursion. डायरेक्टली एडवांस रिकर्शन पे अभी हम लोग को क्वेश्चंस के सॉल्व नहीं करने, सिर्फ बेसिक रिकर्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. तो फॉर दैट यू कैन डायरेक्टली जंप टू द लिंक लिस्ट. दे आर प्रीटी डिफाइंड क्वेश्चंस एज वेल. तो लिंक लिस्ट के बहुत फेमस क्वेश्चंस होते हैं, वो 15-20 क्वेश्चंस है दैट यू कैन फाइंड एनीवेयर. You can find it on the lead code discussion section or anywhere on the GFG as well. So yeah, feel free to find like most frequently asked questions of linked list, and you will ended up getting a list. You can start solving those questions. Okay, once you cover the linked list, then start forward solving the questions of the trees. Okay, because after the linked list, the next data structure which comes into the list is trees. You can start solving questions of start solving basic questions of trees first, like what are the traversal technique, pre-order, in order, post order, both in both the ways, like in the recursion as well, or by using the loop as well, by iterating those. And after that, proceed with the next level of traversal, like in order or spiral traversal, or there are number of views in the tree as well, like right view, bottom view. These are just nothing but the you are getting the in and out of like how you can traverse a tree, how many ways there are possible to traverse the entire tree. क्योंकि ट्री के क्वेश्चंस में होता कुछ भी नहीं है, तुम्हें कोई भी जस्ट प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. फॉर एग्जांपल, यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ लीफ नोड्स, और यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स, राइट? सो करना क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स नथिंग बट जैसे यू हैव टू ट्रेवर्स इनटू द ट्री, राइट? तो तुमको जब पता ही नहीं होगा कि कितने सारे पॉसिबल वेज हैं और कौन सा बेस्ट वे है, तब तक उस क्वेश्चन को करना थोड़ा सा और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा. सो आई ऑलवेज रिकमेंड टू स्टार्ट विद द ट्रेवर्सल टेक्निक ऑफ ट्रीज, और टू वंस यू कवर अप द ट्रेवर्सल टेक्निक, proceed with the views of the tree, कि right view, binary view, top view, or spiral view or diagonal view.
you can start with, then once you're done with all the views of the binary tree, start for move forward with the questions of the actual binary tree. ठीक है, जैसे लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर हो गया, या फिर और भी उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स हो गए, या फिर के नोड्स टू टेल ऑल द नोड्स फ्रॉम द एट द डिस्टेंस ऑफ के फ्रॉम दैट गिवन नोड, इस टाइप के क्वेश्चंस हो गए। तो वो सब सारी की सारे क्वेश्चंस में लगती है एट द एंड ट्रेवर्सल टेक्निक्स ही है, राइट? सो ओके, लेट्स पिक सम क्वेश्चन। Okay, 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 okay. Sir, the question whose logic I'm not able to build, I was solution, but after some days I'm still not able to solve it. Okay, so for that, like if you're not able to build up that logic for the questions, try to give it at least 1 hour or so. But if agar wahan pe after giving an entire, after dedicating an entire hour, if you are not getting any logic or any hint in that question, ट्राई टू सी द सॉल्यूशन। बट वहां पे भी पूरा एक बार में डायरेक्ट सॉल्यूशन मत देखा करो, ट्राई टू टेक अ हिंट कि विच डेटा स्ट्रक्चर इज दिस गाय इज यूजिंग, ओनली ट्राई टू फाइंड आउट लाइक विच डेटा स्ट्रक्चर। अब तुमको यहाँ पे खुद ही फिगर आउट करना है कि नाउ यू गॉट द पॉइंट कि तुम्हारे पास में डेटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज होना है। अगर वो चीज यूज करनी आ गई है तो उसके बाद में देखना कि डेटा स्ट्रक्चर तुमको पता चल गया, उसके बाद देखना कि अब मैं इसको कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा, देन जंप ऑन टू द एग्जैक्ट सॉल्यूशन। फिर उसके बाद में you forget to once like after, if you after some days if you again try to solve it question, you forget about it because you haven't solved 2 or 3 other questions of the same type। तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेट्स वाई ऑलवेज से कि अभी ना हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग में चल रहे हैं, एट दिस पॉइंट वी आर जस्ट लर्निंग ऑल द डेटा स्ट्रक्चर्स। like once you learn all those data structures, it is really really important to solve the random questions as well। क्योंकि अगर रैंडम क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करोगे तो इन द पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर यू ऑलरेडी नो कि इस टाइप के क्वेश्चन में मुझे मालूम है, मैं अभी सिर्फ लिंक्ड लिस्ट के क्वेश्चन कर रहा हूं तो उसमें लिंक्ड लिस्ट ही लगनी है। यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस फैक्ट, राइट? तुमने वहां पे माइंड अपना ये नहीं चलाया, तुमने यहाँ पे ये फिगर आउट नहीं किया कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर इज द बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर। यू ऑलरेडी नो कि ये वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर लिंक्ड लिस्ट लगेगी, मैं उसको लगा देता हूँ, आई जस्ट नीड टू इम्प्लीमेंट इट एंड और दैट्स इट, आई विल गेट एन एसी, right? But in the contest they will not going to specify which data structure you have to use. It is up to you, you have to figure out, right? So for that it is very important to solve other questions as well once you learn all the data structures। I'll covering up that thing as well, no issues। भाई बेसिक क्वेश्चन कहाँ मिलेगा? Ankit, definitely you can try it out on the lead code there। You can just sort those questions by topic wise and then again sort them by the difficulty level। So for every particular topic, for every particular data structure, you will find the easy questions and try to sort them with that accuracy as well। So okay, for the recursion, if you are asking for the recursion, same platform lead code, or you can go with the GFG, or you can just there are a lot of list presents out on the internet, so you can definitely try it out that as well। But होता वो कुछ नहीं है, वो होते लिंक लिस्ट और लीड कोड GFG के ही हैं links। Can you suggest the best website for practicing DSA coding questions? Definitely, yeah। For practicing and Kirtana, I am just assuming like if you are asking me this question, then you are asking for the basics of DSA questions and not the random questions। For the basic question, yeah, for the basic questions you can start solving easy questions on the lead code, or you can start solving easy questions on the GFG platform as well, that is fine। Okay, so yeah, because I'm suggesting you the GFG and the lead code because on lead code there's a discussion section which will give you the number of ways to solve this one, to number of ways to solve the particular question, and GFG because they will let you know all the possible ways to solve that particular question। And I want to know the website for DSA practice। For the DSA practice, same, you can go for the lead code, and once you learn all the data structures, now the point comes कि तुम्हें सारे concepts आ चुके हैं DSA के, right?
तो अब जब तुमको सारे कॉन्सेप्ट डीएसए के ऑलरेडी आ चुके हैं, नाउ द पॉइंट इज यू हैव टू प्रैक्टिस योर एफिशिएंसी, कि तुम उसमें एफिशिएंट कितने हो, तुमको कितना डेटा स्ट्रक्चर्स आ चुका है, वेदर यू आर एबल टू फिगर आउट विच डेटा स्ट्रक्चर यू हैव टू यूज और नॉट फॉर दैट, और टू गेट सम स्पीड वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस, राइट? क्योंकि अभी इंटरव्यू के पार्ट को जब मैं कवर करूंगा, यू विल बी ओनली हैविंग द 1 hour, राइट? एंड एट दैट टाइम यू हैव टू बी वेरी क्लेवर, यू हैव टू बी वेरी फास्ट वाइल सॉल्विंग दोस क्वेश्चंस। उसके लिए कॉन्सेप्ट में आते हैं कॉन्टेस्ट। फिगर आउट क्वेश्चंस करना है, तुम्हें कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करना है, वहां पे यूज आते हैं कॉन्टेस्ट, बिकॉज इन दी कॉन्टेस्ट दे विल नॉट गोइंग टू टेल यू दैट इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लिंक्ड लिस्ट, और इट्स अ क्वेश्चन ऑफ ट्रीज, और इट्स अ क्वेश्चन ऑफ two pointers, it's a question of stack. They will just give you the problem. Now from that problem you have to figure out, right? That is why I'm saying ki for the beginners you can start first with the basics of DSA. In the basics of DSA you will start with the basic data structures, array, string, and then stack, queue, and then recursion with the after the recursion linked list, then trees, after the trees go with the graphs, and then with the DP. Okay, once you cover all the data structures, now since you already know all the data structures, try to solve random questions just to test ki whether you are able to figure out or not. If you have solved enough random questions, try to take participate in the contest, now to speed up your algorithmic process, to speed up your thinking process. Okay. uh, Bro, backlog matters. I'm poor at my academy but good at coding. Yeah, Mayur, backlog, to be very honest, in the if you are sitting for the college placements, there are a lot of companies which usually put this mark like you should be having no zero arrears in the zero backlog or arrears in the past. So definitely it will going to matter for the college placement, but once you sit for that off campus, it hardly going to matter. How many hours should I spend to learn DSA in each day? Vishnu, there is nothing. It is very subjective from person to person, because it depends on the person's everyone's capability. But if you are asking me like how many hours, I'll suggest you like there is nothing as of number of hours, but you should be very consistent. Like in the disciplined manner, you should be doing the DSA. It is a very kind of, you can say, a prerequisite, because ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने आज एरे के एक क्वेश्चन लगा लिया, अब अगला क्वेश्चन तुम एक हफ्ते बाद लगा रहे हो, उसी टाइप का भी लगाओगे तो भी भूल जाओगे। तो उस टाइप के क्वेश्चंस भी लगा रहे हो, तो इन द स्टार्ट ट्राई टू गिव एज मच पॉसिबल टाइम यू कैन, बट स्टिल द पॉइंट इज कि यू शुड बी डिसिप्लिन। अगर इन द इवन इन द वर्स्ट डेज यहाँ पर तुम बहुत ज्यादा बिजी हो, तो वहां पर भी कोशिश करना कि एटलीस्ट मारा मारा 30 minutes यू विल एटलीस्ट गिव टू दैट, to just to revise. उसमें कोई नया क्वेश्चन मत लगाना, just to just revise the previous questions, that will be fine. But yeah, discipline is the most important way. Okay, I want to know the website. Okay, yeah, I already picked up. Is this type of placement DSA sheet plus yeah, they are very much sufficient or very much enough for that to prepare for the DSA, because DSA sheet of anyone you can try it out, because they are nothing but just the frequently asked questions in the interviews. 6 लाख की जॉब क्रैक करने के लिए डीएसए अपना जरूरी है क्या? इफ यस तो कौन कौन से टॉपिक करना पड़ेगा? ओके अंकित, from this I'm just assuming for to crack a 6 LPA job, or specifically I'm not telling you whether 6 LPA or 8 LPA. I'm just telling ki if you are looking for a job in a top MNCs, definitely you require to cover the advanced data structures. But if you are targeting any service based company or a company with a not that high package, at least simple DSA is still a bit enough. But yeah, so on the simple data structures, I just meant that array, strings, stack, queue, and linked list, and along with some bit basic concepts of recursion. Then you can skip the graph and DP. That is fine. ओके, तुमने भी कोई डीएसए शीट फॉलो की थी क्या? नो अंकित, इन माय टाइम देयर वाज नो डीएसए शीट्स एट बैक देन एट दैट टाइम, सो I still remember that I followed a channel. It was a My Surgery, but yeah, it's a bit outdated nowadays. A lot of good channels and good resources are present out. Okay, is it okay? I'm not aware of topics like DP, backtracking, trees, and tries. Okay, yeah, so it is fine if you are not aware of the topics like the DP and tries of trees, but
to so but this is but it can be a area for you, a kind of a area once you sit place once you start applying for the top MNCs, because in usually nowadays every top MNCs will ask you the questions from the tries, or they will ask you the question from the trees, so and from the DP or from the DPA as well. So yeah, it will be a problem at that point. Okay, so I think I have covered enough questions. So now coming on to the next part. अभी तक हम लोगों ने बेसिक्स क्यों करना चाहिए था, कौन सी लैंग्वेज हम लोगों को चूज करनी थी, वी हैव गॉन थ्रू इट, रोड मैप फ्रॉम द DSA, like how you can start with the basics and then how you can proceed further with the advanced DSA. You have then move now we have covered all the data structures, right? अब हम लोग बात करने वाले हैं एक क्वेश्चन की. अभी मुझे एक दो क्वेश्चन भी इसमें मिले थे कि वेदर आई शुड डू CP और वेदर आई शुड टेक पार्टिसिपेट इन द कॉन्टेस्ट और नॉट, राइट? मतलब DSA करूँ या फिर सिर्फ DSA से काम हो जाएगा. कभी शायद आई रिमेंबर द नेम, अजय आस्क्ड मी द क्वेश्चन कि CP इज रिक्वायर्ड टू गेट इनटू टॉप MNC और DSA बिट इनफ. सो देखो एक बात बताओ तुम लोग मुझको कि DSA और CP के लिए करना ही क्यों है? प्लेसमेंट्स के लिए, राइट? सो इफ यू थिंक दैट यू आर गुड इनफ इन DSA और इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग, from that good enough I just meant ki you are completely capable of figuring out like which data structure you need to use and within the time limit as well, right? Then for the basic, like you can say for almost 7 to 80% of the MNC or the product based companies, data structures is completely fine. But if you think ki you are in the first year of your college, you are in the second year of your college, then I highly recommend you to at least put a hand to get your hands dirty on the CP as well. क्योंकि CP में ना होता क्या है, CP is just nothing but they will give you a real life problem. वो तुमको एक सिचुएशनल बेस्ड रियल लाइफ प्रॉब्लम देंगे एंड विद दैट प्रॉब्लम यू हैव टू फिगर आउट कि अब इस वाली प्रॉब्लम को मुझे अचीव कैसे करना है, राइट? तो वहां पे CP डेफिनेटली विल हेल्प यू इन गेटिंग योर लॉजिक बिल्डिंग वेरी वेरी इजी, इन बिल्डिंग अप योर लॉजिक, राइट? सो CP इज वेरी हेल्पफुल. बट अगर if you are in the third year or you are in the final year of your placements, I won't recommend you to get your hands dirty over the CP, because now you are having not that enough time, right? So at in the, you can say in the third year or in the fourth year, you have to be like very choosy at that time कि मुझे बेस्ट चीजें करनी है अपने लिए. अब मैं अपने हाथ सब जगह नहीं मार सकता, मुझे सिर्फ कुछ जगह हाथ मारना है और उसमें रिजल्ट चाहिए, राइट? तो अगर तुम थर्ड या फोर्थ ईयर में हो और इफ यू आर लुकिंग फ्रॉम अ स्विच फ्रॉम एनी अदर इंडस्ट्री टू IT, then DSA I will recommend you. But if you are in the first year or second year of your college, I highly recommend you to go with that CP part. Or if CP interests you, if you think कि मुझे CP में बहुत मजा आ रहा है, like there is a student asked me like I'm not good enough in the academics but I'm good in coding. So definitely you should get your hands dirty over the CP as well, because it will help you stand out from other candidates, right? क्योंकि ऑलरेडी अगर तुम्हारे बैकलॉग्स हैं तो आई एम अज्यूमिंग कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज कॉलेज प्लेसमेंट, कैंपस प्लेसमेंट चली जाएंगी. बट इन द ऑफ कैंपस इट डजंट मैटर अ लॉट. तो वहां पे अगर ऑफ कैंपस में यू विल बी हैविंग अ नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, मोर हायर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, मोर हायर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, और द कंपटीशन इज विल बी वेरी वेरी हाई. So at that point, to stand out from other candidates, your good profile over the CP platforms, it will gonna help you to stand out. But ऐसा मत करना है कि सिर्फ CP पे अपनी तुम लोगों ने सिर्फ प्रोफाइल बना ली है और एक्चुअल में इंटरव्यू में तुम्हें नहीं आना, तो अदरवाइज वो फिर एट द एंड फंस जाओगे वहाँ पे. ठीक है, एक दो और क्वेश्चंस ले लेते हैं. प्लीज टेल मी द बेस्ट चैनल टू लर्न DSA more efficiently. Okay, I'll let you know the strategy to solve the questions more efficiently. This is the next thing I'll going to pick it up. And what is that? Okay. My problem लिए अगर मैं कोई भी शीट फॉलो करूँ या GFG प्रैक्टिस करता हूँ तो वो बहुत अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं. लाइक he says sort the array, but when we give DSA round of company, okay, Ankit, they give problem statement like a story, correct? Ankit, yeah. So Ankit, for that, basically what will going to happen in the interviews or in the online assessment round,
नो वन विल गिव यू द डायरेक्ट क्वेश्चंस, राइट? इसीलिए मैंने बोला अगर बिल्कुल बिगनर हो तो सारे डेटा स्ट्रक्चर्स अगर एक बार तुमने कवर कर लिए हैं तो उसके बाद में रैंडम क्वेश्चन जरूर लगाना। फ्रॉम दैट रैंडम क्वेश्चन आई जस्ट मेंट कि तुमको डायरेक्टली वो वाले क्वेश्चन नहीं लगाने की सॉर्ट दिस एरे और गिव द राइट व्यू ऑफ दिस ट्री, because these are the pretty straightforward problems. You have to solve the questions जिसमें already की story line up होती है that you are given a garden, you have to water that garden, there are a number of taps, there is a street, there are number of lamps in it, there is a robber who plan to rob the house, but there is a condition that he cannot rob the adjacent house. Like these kind of questions, यहाँ पर situational, these are the situational based questions. इन दिस एंटायर सिचुएशन उन्होंने ये नहीं बोला कि तुमको ये ट्री का क्वेश्चन है उसका राइट व्यू प्रिंट कर दो, राइट? इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस यू हैव टू फिगर आउट कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर लगेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस डेफिनेटली यू हैव टू सॉल्व। वंस यू सॉल्व ऑल द डेटा स्ट्रक्चर्स, वंस यू सॉल्व कि तुम्हारे पास में एक इनफ नॉलेज आ चुकी है, देन आफ्टर गो विद दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस कि यहाँ पर हमारे पास में एक सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन होगा, वहां पे हम लोग डीएसए को फिगर आउट कर रहे होंगे कौन सा डेटा स्ट्रक्चर उसमें यूज हो रहा है और फिर देन उसकी ऑप्टिमाइज वर्जन पे आएंगे, राइट? इवन दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच आई एम गोइंग टू कवर, लाइक हाउ यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन मोर एफिशिएंटली इन द इंटरव्यू और इन द ऑनलाइन असेसमेंट राउंड। ठीक है, सो नाउ सो फार आई एम अज्यूमिंग कि तुम लोगों को डीएसए आ चुकी है, तुम लोगों ने सारे के सारे डेटा स्ट्रक्चर्स के एक गुड इनफ अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस कर लिए और बेसिक तुमको स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर कोई प्रॉब्लम देता है तुम उसे सॉल्व कर लेते हो, राइट? अब उसके लिए तुमको उसको मोर एफिशिएंटली अगर उसको और अच्छे से करना है तो व्हाट विल बी द वे? सी, वंस यू गॉट एनी क्वेश्चन इन एन इंटरव्यू फॉर एग्जांपल एंड दिस इज समथिंग जो तुमने पहले से सॉल्व नहीं किया हुआ, सो टू सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ दैट काइंड फर्स्ट ट्राई टू गेट इट अ ब्रूट अप्रोच ऑफ इट, कि उसकी ब्रूट अप्रोच हो क्या सकती है उस क्वेश्चन को करने की। नो मैटर राइट नाउ एट दिस इंस्टांस you should never worry about कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। फाइनली एट दिस पॉइंट यू शुड ऑलवेज बी कंसंट्रेटेड कि इसको मैं अभी सॉल्व कैसे करूंगा बस। नो मैटर मेरे कुछ टेस्ट केसेस फेल हो जाएंगे बट स्टिल मुझे सॉल्व कैसे करना है। वंस यू गेट टू द ब्रूट अप्रोच विच विल बी आई थिंक अगर तुमने सारे डेटा स्ट्रक्चर्स ईमानदारी से कवर करें हैं तो दैट विल बी प्रेटी इजी फॉर यू टू रीच एटलीस्ट टू द ब्रूट अप्रोच। आफ्टर दैट यू कैन बम्प अप टू ट्राई टू ऑप्टिमाइज इट कि अभी इसमें इतना टाइम लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव बिल्ड अप एन अप्रोच और एन एल्गोरिथम विच इज टेकिंग n स्क्वायर टाइम, so how I can reduce it to order of log n or square root of n or to even n, right? or to n log n में उसे कैसे reduce कर सकता हूँ। For reducing like to get an optimized approach, then you have to think कि अब मुझे अगर उसमें optimized करना है तो अब मैं इसके लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज कर सकता हूँ, राइट? मैं इसकी छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यू विल गेटिंग अ क्वेश्चन, यू विल बी हैविंग द कॉन्स्ट्रेंट्स, राइट? अगर वहां पे कॉन्स्ट्रेंट से भी तुम लोग पता कर सकते हो कि उसकी ऑप्टिमाइज अप्रोच क्या होगी। अगर वहां पे तुम्हारे पास में n है फॉर एग्जाम्पल 10⁻⁶, देन यू ऑलरेडी नो कि 10⁻⁶ अगर n है तो n स्क्वायर में तो सॉल्व होना ही नहीं है क्वेश्चन, राइट? इस ऑप्टिमाइज वे इट विल बी कि वेदर आई कैन सॉल्व इट इन n और इन n log n। तो अगर मुझे सबसे पहले n log n में देखना है तो n log n मींस आई हैव टू यूज समवेयर ऑफ अ बाइनरी सर्च। तो क्या इसमें मैं कुछ तरीके की सॉर्टिंग कर सकता हूँ? अगर मुझे इसे log n में करना है और n log n में करना है, बेसिकली आई जस्ट नीड टू ट्रेवर्स द एंटायर एरे वंस एंड इन बिटवीन इन द नेस्टेड फॉर लूप आई जस्ट नीड टू यूज समवेयर काइंड ऑफ log n अप्रोच। तो log n अप्रोच बेसिकली कि क्या मैं उसमें सॉर्टिंग कर सकता हूँ क्या? अगर सॉर्टिंग से काम मेरा बन रहा है तो मेरा काम हो जाएगा, राइट? तो तुमको ऐसे फिगर आउट करना होता है, लाइक इफ यू गॉट द कॉन्स्ट्रेंट्स यू विल गेट यू विल गोइंग टू गेट कि इसकी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी और उसके अकॉर्डिंग टू फिगर आउट कर सकते हैं कौन सा डेटा स्ट्रक्चर उसमें यूज हो रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ब्रूट अप्रोच अकॉर्डिंग टू यू लीड व्हिच स्किल्स आर मोस्ट रिक्वायर्ड इन फाइनल ईयर स्टूडेंट फॉर जॉब सीकर्स। ठीक है, ठीक है, ओके दे आर नॉट ठीक है। फॉर द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स लाइक
ओके, तो अभी तक हम लोग कॉन्टेस्ट हम लोगों ने पार्ट ले चुके हैं, हम लोग ये वाली बात समझ गए हैं कि हाउ व्हाट इज द स्ट्रेटेजी टू सॉल्व द क्वेश्चंस मोर एफिशिएंटली. वन इज कि स्टार्ट विद द ब्रूट अप्रोच फर्स्ट, देन ट्राई टू ऑप्टिमाइज इट. अगर मैं ऑप्टिमाइज की बात कर रहा हूँ तो आई जस्ट मेंट कि उसके सारे वेज, ऑल द नंबर ऑफ वेज टू सॉल्व दैट क्वेश्चन. ठीक है, इन द स्टार्ट वंस यू स्टार्ट जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग दोज रैंडम क्वेश्चंस. डायरेक्टली ऑप्टिमाइज अप्रोच पे मत आना. अगर आ पा रहे हो दैट इज फाइन, बट अगर नहीं आ पा रहे तो ब्रूट अप्रोच से स्टार्ट करना एंड देन ट्राई टू ऑप्टिमाइज इट फर्दर. कि एक बार उसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने रिड्यूस कर दी, लाइक फॉर एग्जाम्पल यू हैव कम टू इट ऑन एन लॉग एन अप्रोच, तो उसके बाद उसे ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करना स्पेस के बेसिस पे कि कैन आई ऑप्टिमाइज इट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, right? In this way you will be getting all the clarity कि इस वाले क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के ये तरीका भी हो सकता है. एंड एट द सेम टाइम यू विल गेट अ लॉट ऑफ क्लैरिटी कि मैं उसकी ऑप्टिमाइज अप्रोच कौन कौन से कैसे कैसे निकाल सकता हूँ. ठीक है, ये हो गया एफिशिएंटली वे सॉल्व करने के. इसके अलावा इफ यू लाइक फॉर द थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स, now like since you are already having very less time, right? So you have to be very choosy at that time. You do not have to think about कि मुझे हर जगह 60 70 80 मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं और अब मैं 5 5 घंटे मेहनत करूँ. कर पाते हो दैट इज फाइन, दैट इज गुड, गो फॉर इट. बट अगर एट द एंड इफ यू हैव अ वेरी लेस टाइम, ट्राई टू बी चूजी. फ्रॉम द चूजी एडजस्टमेंट की पहले बेसिक्स ऑफ डीएसए कवर अप करना, देन ट्राई टू सॉल्व सम रैंडम क्वेश्चंस. प्रोसेस विल बी सेम, ट्राई टू सॉल्व सम रैंडम क्वेश्चंस. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि अपनी फाउंडेशन जो होगी डीएसए की वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग रखना फ्रॉम द फाउंडेशन. एंड इट इज नॉट ओनली फॉर द थ्री और फोर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर ऑफ द स्टूडेंट, इट इज फॉर ऑल. वंस आई एम सेइंग कि डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हो, प्लीज 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 गो थ्रू द इनबिल्ट लाइब्रेरीज की हाउ दे आर फंक्शनिंग. सॉर्ट फंक्शन काम कैसे कर रहा है, मैप की वर्किंग कैसे हो रही है, इफ यू आर यूजिंग अ प्रायोरिटी क्यू और अ हीप, उसके अंदर पुश और पॉप ऑपरेशन होते कैसे हैं. Very honest with you, in the interviews, interviewer ask such kind of questions to just know कि how deep you have the knowledge. तुमने लिख दिया है यू आर हैव अ गुड प्रोफाइल ऑफ सीपी एट दिस एंड दैट प्लेटफॉर्म, एंड एट द एंड इफ अगर तुम्हें ये वाली चीज़ों की वर्किंग की तुमको जानकारी नहीं होगी, देन इट विल गिव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर प्रोफाइल. सो टू हैव अ गुड फाउंडेशन, please go through all the functioning of the inbuilt libraries. That's one thing. Try to cover time complexity whenever you solve the question, because I saw whenever I took the whenever I took a real time interview, I saw a lot of students just solve the problems even in the optimized way. But जब मैं उनसे time complexity पूछता हूँ, they will ended up getting confused कि whether it can be n, no, it can be n log n. So this is something कि if you have solved the question, interview will automatically think कि you already know about the time complexity of that algorithm that you have written. So please try to go through the time complexities. And the third thing is, since I asked you to learn the C++ or Java, please go through the OOPS concepts of them as well, because OOPS concepts is something you will going to use in the industry a lot. ठीक है, अभी के लिए सिंपल क्वेश्चंस में बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट भी होता है कि इफ आई एम एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन वाई द लूप्स और वाई यूजिंग सिंपल वेरिएबल्स और वाई सिंपल यूजिंग स्विच और वाइल कंडीशन, then why we are studying the OOPS concepts? Because OOPS is nothing but just the blueprint of solving any question or to achieve any task. अगर कोई मेजर प्रॉब्लम तुम्हारे पास में आई है, बेसिकली दीज आर समथिंग यू विल गेट अ मोर ओवर गुड एक्सपीरियंस व्हेंस यू मेड अ गुड प्रोजेक्ट्स ओवर दोस ओवर द टेक्स्ट यू हैव लर्न. ठीक है, तो वहां पर ऊप्स कॉन्सेप्ट्स का बहुत ज्यादा यूज होता है. टू हैव अ गुड फाउंडेशन, problem solving is you should be having a good problem solving with the working of the inbuilt libraries. Second is that please focus on the time complexity and space complexities. Third point is that you should be having a good grasp over the OOPS concepts. ठीक है, okay. Now minimum 8 CGPA. Satya, I didn't get your point. Ankit, my college percent is 60. Should I mention it in my resume or not? And also in your opinion कितने minimum percentage होना चाहिए resume में mention करने के लिए?
इफ योर अंकित, इफ यू थिंक, देखो अभी इसके लिए मैं रिज्यूमे के लिए इस वाले पार्ट पे आऊंगा, तो डेफिनेटली आई विल कवर अप, ओके डेफिनेटली आई विल पिक अप योर क्वेश्चन कि अगर परसेंटेज कम है तो किस किस चीज को मेंशन तुम लोग कर सकते हो. ओके, बट इन द मीनवाइल लेट्स पिक सम अदर कमेंट्स. ठीक है, ठीक है, चलो. सिंस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इनफ ऑफ डीएसए कि कहाँ से तुम लोगों को स्टार्ट करना चाहिए, फ्रॉम वेयर यू कैन स्टार्ट, how you can move forward, whether you should do CP or not, whether you should take participating in the contest or not. I will definitely recommend you to take participate in the contest because it will help you to solve the questions in the time constraint or in the time bounded manner in that interview itself, क्योंकि तुम्हारे पास में टाइम बहुत कम होगा, तो it will give you a good habit of solving the questions within the given time. So definitely take part in the contest. Second benefit of participating contest is कि थोड़ा सा प्रेशर आता है, एंड द प्रेशर यू विल बी कैपेबल, यू विल बी थिंकिंग टू फिगर आउट दैट विच डेटा स्ट्रक्चर यू शुड बी यूजिंग. सो डेफिनेटली इट्स अगेन अ पॉजिटिव पॉइंट टू पार्टिसिपेट इन द कॉन्टेस्ट. ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू द रिज्यूमे पार्ट कि यू हैव डन इनफ ऑफ डीएसए, you have made good projects over the tech stacks you have learned. Now the point comes is ki what you should be covering in your resume, because at the end, when no matter you are applying in the campus placements or even in the off campus, your resume is the representative of you, right? अगर हम लोग कहीं भी ऐसे इंडिया से कोई बाहर इंटरनेशनल फोरम पे कुछ बोलने जाता है, फिर कोई भी स्पीच देने जाता है, देन ही इज नॉट रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ, इट इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया, राइट? सो सिमिलरली, you are not, your resume is going to represent your the things you have done in your college or all the knowledge you have, right? तो उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें, अगर तुमने उसके अंदर सब कुछ ही भर दिया, right, then the issue will be, because nowadays there is a lot more students. जो अभी 2022 के स्टूडेंट्स हैं, उनको अगर कोई स्विच करना है, वो लोग भी होंगे. 2023 के स्टूडेंट्स हैं, उनको अपनी प्लेसमेंट लेनी होगी, राइट? 2024 के स्टूडेंट्स होंगे, उनकी प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाएगी, कैंपस प्लेसमेंट, राइट? तो देयर आर, और उसमें अगर किसी को स्विच करना है अपनी दूसरी इंडस्ट्री से आईटी इंडस्ट्री में, वो स्टूडेंट्स भी होंगे. तो देयर आर अ लॉट मोर कंपटीशन, and there are, since there are lot more number of applications, you for a particular application the recruiter have a very less time to focus on. So that is very important, like which thing you should put it on your resume and what not. So starting from the right from that basic कि अभी तुम्हारे पास में पूरा resume एक blank paper है, अभी तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, you can definitely make your resume from their very good website, either from the Overleaf you can make, or you can make from the Nova resume. You can pick out any good template, and then you can use any template for making up your resume. And what things you can put it on, first is very important, is the experience you have. If you are from the experience, if you are an experienced guy, or shifting from any other industry to IT industry, definitely you should put your experience. If you have any internship experience, or you are a college student, if you have any internship experience or industrial training experience, try to put it in your resume. After that, for example, if you do not have any prior experience of teaching, or of solve or doubt solving, or any internship, or any industrial training, try to put the good projects on your resume. Okay, once you put the good resume, I just, from the good projects, I meant that your project should be hosted on GitHub. At least you should be giving, if it is a backend based project, at least you should provide the link of the GitHub repository by pasting some few pictures of your application, like this is my application, and it is how it looks like. And since it's a backend based application, I haven't hosted it anywhere. Okay, if you are not able to get a good internship in your college time, please try to get your hands dirty over the websites, over freelancing. If you have learned the web development, try to get your hands dirty over the freelancing, so that you can at least have some good live projects on your resume. And all in all, I just want to say ki good projects, if you do not have any experience, good projects becomes more important for you, right? And with the project, please try to mention 2 to 3 things. One is the link of that project, or of the GitHub repository of that project. Second is the tech stack you have used, it should be in a bold manner.
or it should be, the word should be very bold, so that any recruiter will have a look directly on those crucial words, राइट? क्योंकि मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था, एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, रिक्रूटर के पास टाइम उतना ही कम होता है। तो उसमें अगर अपना गेम जीतना है तो प्रोजेक्ट्स में जो इंपॉर्टेंट थिंग है उसको तुमको सीधा बोल्ड कर देना है, बात खत्म। ठीक है, प्रोजेक्ट कवर हो चुके हैं। आफ्टर डेट अगर तुमने बोला कि एजुकेशन में मेरी परसेंटेज जो है वो कम है, राइट, तो फील फ्री टू पुट एजुकेशन आफ्टर दैट प्रोजेक्ट्स। ठीक है, आफ्टर द प्रोजेक्ट तुमने उसको लगा दिया अपनी एजुकेशन को। अगर तुमको लगता है और कम है, मेरी बहुत कम आई है मेरी परसेंटेज, दैट इज फाइन। आफ्टर द प्रोजेक्ट्स यू कैन पुट योर coding skills or the skills that you have learned. Maybe it can be C, or it can be C++, Java, it can be data structure, or it can be WebD. If you have learned WebD तो उसमें तुम React, Node, PHP, Django, Python कुछ भी लिख सकते हो. If you have learned the Android development, Kotlin, Firebase, and any database you have learned, तो वो सारी skills तुम after the projects mention कर सकते हो. Awards or any good ranks that you get while participating in the contest. Right now a lot of contests are going on the lead code, bi-weekly contest hota hai unka. If you are getting a good rank, try to mention it. If you are getting a good rank on any NPTEL certification or any, if like अभी तो शायद आई थिंक गूगल ने भी अपने जो कोडिंग कॉम्पिटिशन लाइक किक स्टार्ट कोड जेम वो विड्रॉ कर लिए हैं। और बट अगर फ्रॉम दैट एडजस्टमेंट की किसी भी कॉन्टेस्ट में अगर तुम्हारी अच्छी रैंक आती है, ट्राई टू मेंशन दोज रैंक्स, ट्राई टू मेंशन दोज गुड सर्टिफिकेट्स आफ्टर द स्किल्स एज इन द अवार्ड्स और इन द रिकॉग्निशंस और इन द अकम्पलिशमेंट। ठीक है, ये एक सेक्शन बनाकर तुम उसमें लिख सकते हो कि ये मेरा काम था, इस चीज में मैंने एस किया है। इफ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन सम हैकाथॉन्स, वहां पे तुम्हारा प्रोजेक्ट आउटस्टैंडिंग हो जाता है, आउटस्टैंड करता है अदर से, वो तुम लोग मेंशन कर सकते हो। आफ्टर दैट कि तुमने अवार्ड्स रिकॉग्निशन लगा दिया, आफ्टर दैट यू कैन मेंशन योर एजुकेशन बैकग्राउंड। ठीक है, अगर किसी का एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है कि आई एम अ स्टेट टॉपर, आई एम दिस टॉपर, आई एम दैट, if you are getting a good percentage, try to put it above, that is fine. This is something that you should be clever of, क्योंकि अगर मुझे किसी को कोई चीज दिखानी है, मैं उसको ऊपर लिखूंगा, बोल्ड मैनर्स में लिखूंगा। मुझे किसी से कोई चीज छुपानी है, मैं दूसरी चीज को बोल्ड कर दूंगा, राइट। तो दिस इज समथिंग कि कुछ गलत, कुछ, दिस इज नॉट अ बैड टैक्टिस, दिस इज जस्ट समथिंग दैट यू कैन ट्राई आउट और दैट यू कैन ट्राई व्हाइल मेकिंग द रिज्यूमे। ठीक है, पहला पॉइंट प्रोजेक्ट रख लेना, एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस नहीं है प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट में लिंक लगाना प्रोजेक्ट का। ट्राई टू हाईलाइट द टेक्स्ट यू हैव यूज, और एक लाइन की वो प्रोजेक्ट है क्या, कहाँ, पूरी राम कथा नहीं लिखनी, बिकॉज एंड वन मोर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ट्राई टू हैव ओनली अ वन पेज रिज्यूमे। No matter how much experienced you are, no matter how I've worked you, how well you have performed in your entire college life, your resume should only be of one page. ऐसा नहीं 2-3 पेज का रिज्यूमे बना दिया, कोई देखेगा भी नहीं उसको। It is always recommended to use a single page resume. जितनी ज़्यादा तुमको लगता है उस चीज़ की वैल्यू है, उसको उतना ऊपर लगाना। किसी चीज़ की लगती है वैल्यू कम है या मुझे उसको हाइड करना है, एजुकेशनल बैकग्राउंड इज समथिंग दैट यू शुड बी गिवन और यू शुड मेंशन इट ऑन योर रिज्यूमे, उसको लिखना ही पड़ता है, तो उसको थोड़ा नीचे लिख देना, दैट कैन बी, दैट्स फाइन। ठीक है, आफ्टर द स्किल्स, accomplishments or the recognitions that you have got, after that educational background, and in the end you can just edit up the other knowledge you have, other you can say the coursework or the other subjects you have covered। ठीक है, बट ट्राई टू बी कंसाइज कि वो आईटी फील्ड के हो। ऐसा ना हो कि तुमने लिख दिया, अप्लाई करने गए थे आईटी की फील्ड में सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल के लिए, तुमने अपने उसमें लिख दिया कोर्स वर्क में मुझे ट्रेडिंग आती है, वो सेंस नहीं बनाएगा, राइट। तो वहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिखना कि यू हैव डन द ऊप्स, यू हैव गुड नॉलेज ओवर ओएस, यू हैव गुड नॉलेज ओवर द डीबीएमएस, तो दैट इज समथिंग दैट इज मेकिंग सेंस। ऐसा मत करना कि मुझे ट्रेडिंग की जानकारी है या मुझे क्रिकेट की बहुत अच्छी नॉलेज है, वो कोई सेंस नहीं बनाएगा, राइट। आफ्टर दैट थोड़ी बहुत जगह बचती है। आई इवन नाउ आई वोंट रिकमेंड एनीवन टू जस्ट राइट द हॉबीज और एक्स्ट्रा करिकुलर, बट इफ यू आर गुड इनफ और इफ यू हैव सम गुड टू शोकेस इन योर रिज्यूमे, feel free to add it in your resume as well कि extra curriculum, if you are for example a coordinator or you are somewhere a lead in some social work, then feel free to add it, that is fine। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ गए, जस्ट लेट मी पिक इट वन बाय वन। मेरी तो हैबिट नोटबुक पर लिखने की है और बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। यह सत्या, डेफिनेटली यू शुड बी यूजिंग पेन एंड पेपर, बट उसके बाद में try to implement it via code। Why I'm saying, because once you solve it on paper, once you write the actual code, there are a lot of differences you will going to be that you will
actually notice. And in that interview itself वो pen paper पर लिखा हुआ कोड नहीं मांगेगा. In the end the interviewer wants you to write the entire code on the IT, right? तो वो एक हैबिट अगर होगी तो that will be a good thing for you. Okay, so bro, you did not answer the right time to start. You do not answer the right time. Okay, I to start taking participating in the contest, please learn all the data structures first. And once you have a good command from the data structure, I just meant कि foundation strong रखना, inbuilt libraries, time complexity, space complexity के concepts को पढ़ लेना. After that, जब तुमको सारे data structures आ चुके हैं, देन आफ्टर स्टार्ट टेकिंग पार्टिसिपेटिंग इन द कॉन्टेस्ट. वहां पे इजी क्वेश्चंस लगेंगे पहले, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अभी फिगर आउट करना है तुमको. तो फिगर आउट करने में ठीक है, फिगर आउट कोशिश हो. कहीं देयर माइट बी केसेस की क्वेश्चन बहुत इजी था और फिगर आउट नहीं कर पाए, बट दैट्स हाउ यू स्टार्ट. कि कॉन्टेस्ट में स्टार्ट किया तुमने पार्टिसिपेट करना. आफ्टर दैट अगर नहीं हो पाता, आफ्टर द कॉन्टेस्ट बैठना. cherry on the cake is the, if you have any peer with you, if you have any one of your friend with you is engaging coding with you, तो after the contest please try to discuss the questions कि भाई ये वाला क्वेश्चन में मैंने ये वाला अप्रोच लगाया था, how can I optimize it. अगर मेरे पे हो गया, तेरे पे नहीं हो पाया, तो देख मैं तुझे समझा देता हूँ, तुझे तुझ पे हो गया, मुझे पे भी मुझसे नहीं हो पाया, तो प्लीज help me in getting the overview of this question. So yeah, definitely if a friend can help you a lot. What recruiter wants if someone switch from service based, example from Cognizant to any product based. Okay, Siva. So if you are trying to make a switch from any service-based company to product-based, what they will expect is the if you are having a very high number of experience, like for example 5 to 6 years of experience, they will ask you a bit about the system design as well. In the system design, the low level design, you can consider a low level design by considering the by a good level of knowledge of the oops concepts. जैसा मैंने सबको बोला था कि अभी कॉलेज के टाइम पे for having a good foundation oops concepts पढ़ लेना. But if you are a very high experience, a high level design can also, you can also expect that they will ask you at least in 1 or 2 rounds in that interview, in the entire interview process. Okay. And what recruiter was okay. And for to if you are, for example, if you are applying from Cognizant to any product based company, please try to go through its description. उसमें JD होता है, because you are applying for the experienced role. JD matters a lot, to please go through the JD, and that is the job description, which tech stacks they want. I'm not saying you should be a scholar in that particular tech stack, but at least you should have a knowledge in that tech stack. ऐसा नहीं कि उसने Python मांगा तो Python आती ही नहीं है. At least try to get a good grasp over the Python. Okay, and yes, a bit knowledge of the system design will also gonna help you a lot. Which format of resume looks good if we put education at last? Okay, that in, if you want to put education at last, try to go with the 2-column or the 2-sided resume, in which on the one side you will be putting that your on the one side you will be putting up your experience or projects, and then after you can put up your skills, and in the end you can put the education part on the you can say on the right side. You can put the all the accomplishments you have made, all the important links that you want to put it out on the resume. For example, if it can be of the LinkedIn, or it can be of the your profile on the different platforms, or on the Lead Code, or on the Codeforce, etc. Right, and then you can write the all the coursework that you have covered. So your 2-sided resume is okay, and you can find a enough number of templates on the Overleaf or on the Nova resume. Is the DSA compulsory for web development? Okay, this is a very important question which I have left to cover. I'm yet to cover this question, and it from this question I'll also carry forward with the recession as well. So yeah, we're going to pick up this next. What recruiter want? Okay, I already covered up. Is DSA okay, this is the same question. SS gaming, I'll definitely gonna cover this question, bro, don't worry. What recruiter wants? Okay, I already covered. Talk to you. Okay, don't worry. So okay, now the very basic question or the very basic doubt is coming into the every student mind ki should I go with the DSA or with the web development? देखो यार, nowadays recession is going on, right? There are very few companies which are hiring right now. Almost every organization, no matter wo fan company and no matter if it is a top MNC, they have freezed their hiring,
right? And this is the bitter truth. From the last 6 months, every organization have almost stopped their hiring, even they are firing their employees, right? But this is something which is very badly affected everyone, right? Because there are number of people with having a number of situations with themselves. Maybe possible someone is looking up for a job and he is not getting it, right? So if you are from a I'll take up this question from that year wise year. Okay, so if you are from a first year or a second year from your college, I highly recommend you to explore a lot. From the exploration, I just meant, if you are going to the web development, see, DSA is something that you have to do if you want to get a good placement in the IT sector. But DSA doesn't require a 4 years of but DSA doesn't require 4 years of journey, right? It can be done in 1 year as well, right? So the most important thing is, if you are in the college first year or in the second year, please try to explore as much as you can. From the exploration, I just meant, if you want to do web development, go for the web development. Start learning HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, and then React or Angular. It's an option between React and Angular. You can go with either of them, whatever you find easy. In the backend, go for the Node.js, and once you learn those web development, try to just implement your knowledge. How you can implement it? By going into the freelancing field. Okay, so this the freelancing is a completely, you can say, an out of it's a completely separate topic, which I will be covering in some other session or in some other masterclass. But if you are a college grad or if you're a college student, I definitely recommend you to step at least into the freelancing. Because if you will gonna face such situations, क्योंकि अभी तुम फर्स्ट सेकंड ईयर में हो, अगर तुम फोर्थ ईयर में आते हो, सिचुएशन रिसेशन की होती है, दैट टाइम यू हैव अ नॉलेज ऑफ फ्रीलांसिंग, राइट? तो वो फ्रीलांसिंग की नॉलेज तुमको साइड की जॉब दे सकती है, राइट? एंड आई एम नॉट सेइंग कि साइड की जॉब तुमको आखिरी रिसेशन के टाइम पे देगी. इफ यू आर मेकिंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द फ्रीलांसिंग, यू विल गेट अनदर ऑप्शन कि मैं सिर्फ प्लेसमेंट में बैठूं या मैं कुछ और भी कर सकता हूं. फॉर एग्जाम्पल, ये वाली बात तो हुई सिर्फ एक्सप्लोरेशन की फॉर द वेब डेवलपर्स. वॉट इफ समवन is have started learning the Android development, then at least try to make some good applications and try to post it on the deploy it on the Play Store. ओके, बिकॉज अगर तुम्हारा कोई भी एक भी एप्लीकेशन हिट करता है, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ वेरी सिंपल एप्लीकेशन, यू वोंट बिलीव कि उनके इतने बहुत ज्यादा थाउजेंड इन इवन इन द लैक्स उनके डाउनलोड होते हैं, राइट? अगर तुम्हारा कोई भी एप्लीकेशन बम्प अप करता है, कोई भी एप्लीकेशन थोड़ी पॉपुलैरिटी गेन करता है, यू विल गोइंग टू लर्न अ लॉट. अगर उसमें पॉपुलैरिटी भी नहीं आती, देन दिस इज समथिंग यू कैन मेंशन इट ऑन योर रिज्यूमे कि मेरे पास में एक लाइव एप्लीकेशन है जो कि प्ले स्टोर पर डिप्लॉयड है, उसके इतने नंबर ऑफ डाउनलोड्स हैं, यू कैन डायरेक्टली चेक इट आउट. अगर तुमने वेब डेवलपमेंट तुमने की हुई है, तुमने फ्रीलांसिंग में पार्ट लिया हुआ है, यू हैव समथिंग टू शोकेस ऑन योर रिज्यूमे कि आई हैव मेड दिस प्रोजेक्ट, आई हैव मेड दिस लाइव वेबसाइट, आई हैव मेड दिस वेबसाइट फॉर दैट particular US based or EU based startup, and this simply you can check it out, you can put it out that link, but please take the concern from that particular startup कि मैं उनका लिंक डाल दूं ना डाल दूं, ठीक है? दिस इज समथिंग जो तुम्हारे एक्सपीरियंस में काउंट हो सकता है. दिस इज समथिंग जो तुमको आउटस्टैंड कर सकता है और लोगों से, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल ने क्या किया हुआ है, सिर्फ नॉर्मल प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं. और व्हाट यू कैन डू, देयर इज अ थर्ड फील्ड, दैट इज द गेम डेवलपमेंट, व्हिच इज गोइंग ऑन व्हिच इज वेरी ऑन ट्रेंड्स राइट नाउ, राइट? तो गेम डेवलपमेंट तुम लोग कर सकते हो. गेम डेवलपमेंट मतलब सिंपल गेम्स बनाओ, मल्टीप्लेयर गेम्स बना सकते हो. मल्टीप्लेयर गेम्स आई जस्ट मीन कि सिंपल मल्टीप्लेयर गेम्स जो होते हैं, जो कि एक फोन में अगर दो लोगों ने खेली है, या मल्टीप्लेयर गेम्स होगा किसी ने कनेक्टिविटी करके अपना किसी ने पासकोड डाल दिया, जैसे सिंपली द कॉन्सेप्ट व्हिच इज यूज्ड इन द लूडो गेम, राइट? तो ये वाले अगर तुम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज में हो, ये सारी चीजें तुम ट्राई आउट कर सकते हैं. दिस इज फॉर द आईटी फील्ड. इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग कि मुझे आईटी फील्ड से हटके कुछ और ट्राई करना है, definitely try it out for the financial for the you can try it definitely the trading, investing तुम लोग सीख सकते हो. बहुत हाई अमाउंट से मत करना इन द, बिकॉज इन द कॉलेज you have very less amount, you have very you have just a pocket money, right? तो बहुत हाई अमाउंट से मत करना है, बट एटलीस्ट यू कैन लर्न अबाउट द ट्रेडिंग, राइट? तो अगर तुम्हें ट्रेडिंग आती होगी, फॉर एग्जाम्पल, it will take at least an year or 2 years for you to learn the exact number of trading, or mostly depends on how much you practice on the actual practical ground reality पे तुम जितना participate करोगे
जितना ट्रेड करोगे उतना ज़्यादा सीखते जाओगे। तो अगर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में तुम कॉलेज में, यू हैव इनफ टाइम to explore these stuff. You can, if you want to make good money, you can try out content writing. Right now everyone is saying ki AI or chat gpt will going to replace your jobs. It will not going to replace you, because in once you ask chat gpt to write a post for you, what you will going to observe, you will observe that these posts are not the best one. But if you just make some enhancement on those posts, then it becomes a best post, right? अगर तुम अभी चैट जीपीटी को बोलते हो कि मेरे लिए कोई भी पोस्ट लिख दो, वो पोस्ट लिख के तुमको दे देता है, राइट? बट वो पोस्ट अगर तुम कहोगे कि क्या उससे मैं मार्केटिंग कर सकता हूँ, नो, बिकॉज इट इज वेरी, यू कैन से इट इंक्लूड्स वेरी माई सेल्फ काइंड ऑफ पॉइंट, माई सेल्फ की उसमें आई बहुत यूज होता है, वी बहुत यूज हो रहा है, राइट? तो उस काइंड ऑफ वर्ड्स को हम लोग अवॉइड करते हैं व्हेन वी आर लुकिंग फॉर द मार्केटिंग पर्सपेक्टिव। सो अगर उसमें थोड़े बहुत अनाउंसमेंट तुम लोग कर सकते हो, तो यू कैन बी अ गुड कंटेंट राइटर। टेक्निकल चीजों की नॉलेज है, टेक्निकल कंटेंट राइटर तुम लोग बन सकते हो, right? So I definitely recommend you, if you are from the first year and the second year of your college, try to explore as much as you can. Go for the graphic designing. Right now graphic designers, video editors are on the boom. There are a lot of opportunities for them. Every content creator or every influencer right now on on every platform required someone, or as in the as their thumbnail editor, as their video editor, तो वो तुम लोग try out कर सकते हो। I'm not saying कि ये चीजें स्टार्टिंग में तुमको सीधा बहुत सारी अमाउंट दे देंगी, बट एटलीस्ट इट कैन बी अदर ऑप्शंस फॉर यू। और जब तक फोर्थ ईयर में आ सकते हो, यू विल मे बी पॉसिबल, यू हैव अ नंबर ऑफ ऑप्शंस टू चूज कि अब मैं आईटी फील्ड में जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। अगर वो चीज़ें तुम्हारे लिए वर्क नहीं करती, डेफिनेटली इन द थर्ड ईयर और द फोर्थ ईयर गो फॉर द डीएसए वहाँ सीख लेना, तब तुम लोग कर सकते हो। बट नाउ कमिंग ऑन टू द सेकंड पार्ट, इफ यू आर फ्रॉम द थर्ड ईयर और द फोर्थ ईयर ऑफ योर कॉलेज, पहले बैक देन आई अराउंड 6 or 12 और अराउंड ईयर आई ऑलवेज यूज टू से कि तुमको एक्सप्लोर करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, राइट? बट one I didn't remember the exact day, but one day I was just saying the same thing to a guy and he told me कि भैया मैं ये सब एक्सप्लोर कर लूंगा, बट these thing whatever you told me requires a lot of time. It requires an year or so, right, to get a good freelance client. आई एम नॉट लाइक कि अगर मैंने आज एक वेबसाइट बना दी मुझे क्लाइंट मिल जाएगा। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम, बट आई एम फाइनेंशियली वीक। एवरी स्टूडेंट, every people has its own circumstances, and which tell me one thing ki if you are like, if you have a good knowledge over the IT things and you are financially like you need an urgent job, right? So in the recession time, if you are not getting a good job right now, then definitely you can try out other jobs, like the you can be a doubt solver, right? You can be a subject expert, where you can just solve the doubts of the students. You can be an instructor if you have good knowledge over the DSA, right? You can be a good mentor. You can start helping students in getting a good to help the students like how to prepare for the interviews. So these are the other ways in which you can at least sustain yourself in the recession time. One thing on the one part, you can just skill yourself a bit more, but on the other hand you can also try these additional fields which already aligned with your knowledge, right? अगर तुमको डीएसए की नॉलेज है तो उससे अलाइंड वाली जॉब्स को तुम कर सकते हो। अगर तुम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में इतना एक्सप्लोर कर चुके हो कि मेरे पास में काफ़ी सारी चीज़ों की वास्ट नॉलेज है, तो तुम्हारे पास में एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, एम्पल ऑफ ऑप्शन है, दैट यू कैन ट्राई इट ऑफ, राइट? अब क्वेश्चन आ गया था तुम्हारे, आई बिलीव यू विल गेट द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन की इज डीएसए कंपलसरी फॉर वेब डेवलपमेंट? डीएसए और वेब डेवलपमेंट, फिर वही बात आ जाएगी, डीएसए इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग टू मेक अ गुड वेबसाइट, टू मेक अ वेबसाइट यूजर फ्रेंडली। बाय द यूजर फ्रेंडली आई जस्ट मेंट कि तुमने जैसी वेबसाइट पे क्लिक किया, जो लोडिंग का टाइम था वो कम होना चाहिए, राइट? सो दैट इट कैन बी यूजर इंटरैक्टिव। तुम्हें कुकीज उससे कौन सी सेव करवानी है, कहाँ पे क्या चीज़ डेटा को स्टोर करवाना है, उस सब के लिए ऑप्टिमाइज एंड एफिशिएंट वे में उसको स्टोर कराने के लिए डीएसए इज रिक्वायर्ड। and web development, not only for web development, same for the Android, same for the web, same for the machine learning or AI you want to go for,
ठीक है, इन सब में टैक्स डिफरेंट होते हैं, बट डीएसए इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, नाउ पिकिंग अप सम डाउट्स। सर आई एम नॉट गुड इन इंग्लिश, इवन आई डोंट लर्न इजीली टॉपिक विच रोट इन। ठीक है, इज ए जो फॉर मी और नॉट, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट आंसर। Okay, so SS gaming. So if you are not good enough in English, I recommend you, like, once you start preparing for the interviews, and see, there are two things in the interviews which will decision taking factor for you. One is how well you are explaining the question that you have solved, and second is at least you should be capable enough to explain your thoughts to that interviewer, right? So for that, whenever you solve any question whenever you solve any question, at least give 5 to 10 minutes to explain it to yourself. For example, you have solved a question that is the right view of the binary tree. Okay, and in this question, you have solved the entire question. Now you have to explain to yourself. Now what you can do is ki, I'll be giving the root of the binary tree as an input, and I'm using this. I'm using the level order traversal, and I'm using the level order traversal. And when I'm checking at every level, I'm checking if the node is the first node of that level, I'm going to pick it. Otherwise, I'm going to leave it. So in this way, you can explain the question to yourself. Two thing will happen in this once you start doing this thing. One is your vocabulary will be strong. Second, if you are not good enough in English, at least you learn ki what words you should say and what is the best way to express yourself. ठीक है, every interviewer just requires a student who is good enough to explain himself. No one wants a scholar in English, because it's definitely a job of the IT field and not of the English. ठीक है, recession कब जाएगा सर? To be very honest, recession is something which is in no one's hand. Even just when the situation start improvising, something will happen, and no one can tell you the exact date or the exact months, because back then at the time of December or January, everyone was saying, even the experts were saying that in the June recession will be almost over. But then this bank collapse happens in the US, which is again impacting the IT industry. So yeah, no one can say like when will be the recession gets over. So in that recession time, I recommend everyone, like, if you are in the college, please explore yourself other aspects of that of other explore other aspects of fields as well. And if you are someone who already passed out from the college and looking for that opportunity, please try to find other opportunities in your field which align with your field. Like, you can help someone in solving up the doubts. You can, like, all the fields that I told you a bit before. Okay, so do not focus on regression. There are so many companies hiring. Be capable. Yeah, correct. As Devil Gaming mentioned that even in the recession, hiring is going on. Almost all the companies have stopped the hiring, but not all the companies. Right? Still, there is hiring going on. So it might be possible ki the number is very less nowadays, but still there are a lot of startups which are hiring, so you can definitely going to apply for it. You should apply even. Okay, so I am an intern at a company and already done one project using Node.js. Now I am currently working on a live project using React Node and Mongo. So is DSA is necessary for high package? Okay, so Vishnu, if you are an interning at a company and you have already worked on that live project, that is something that from this every interviewer or every recruiter will just get a point key. Okay, he has a knowledge over this tech stack, and not only he has a knowledge, he has also implemented his knowledge in some real life to tackle some real life situations, right? But it's still, for that problem solving, or if you sit for any placement, you will definitely going to have at least a one technical round in which they will completely based on the problem solving or on the DSA. Maybe it can be differ with the company by company, it may be two, maybe it might be three, but yeah, definitely there will be a problem solving round. मेरा क्वेश्चन ये था कि बिना इंग्लिश की ज़्यादा नॉलेज
कि क्या मुझे कि जॉब ज्वाइन करना चाहिए वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए? या डेफिनेटली एसएस गेमिंग यू कैन जॉइन AccioJobs if you have didn't have a good knowledge over English, and definitely you can ask these questions on the support as well. They before joining you can ask the same question to that support ki I'm not good at English, so is there any instructor who will be guiding us in Hindi only? Okay, bro. The question that Devil Gaming is asking, like you are not able to motivate it and you procrastinate every time. Devil Gaming, I just want to tell you one thing, brother. That procrastinating is something which happens with all of us. It was not like कोई बोल सकता है आके वीडियो पर या यूट्यूब पर या कहीं पर भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कि आई एम नॉट प्रोक्रेस्टिनेटिंग, बट दैट इज कम्प्लीटली not possible, because if you are a human you will definitely want to procrastinate, but the point which makes the difference is ki how much you are disciplined in your actions. So the point is कि अभी जैसे तुमने बोला कि मैं अगर खुद को काम करने जाता हूँ बट फिर मेरा मन नहीं करता एंड देन आई जस्ट जंप ऑन टू द प्लेइंग द गेम्स. So in the start you can use the external factors to motivate yourself, so at least you can start working, but in the later stretches it is the discipline which will going to make the difference. Motivation external factor से ही आती है, वो कुछ टाइम के लिए तुमको हाई फील करवाएगी. मोटिवेशन नथिंग बट जस्ट सम एक्सटर्नल फैक्टर, तुमको हाई फील होता है, थोड़ा सा एनर्जेटिक लगता है, तुम काम करने बैठ जाते हो. वंस यू अगेन गेट बैक टू द नॉर्मल स्टेट यू जस्ट रियलाइज कि मेरा मन नहीं कर रहा. तो इन द इनिशियल फेजेस ऑफ योर एनी टास्क और एनी थिंग वॉट एवर यू आर ट्राइंग टू डू, एक्सटर्नल फैक्टर से मोटिवेशन ले सकते हो. डेट कैन बी अ गुड वे, बट इन द एंड फिर वो डिसिप्लिन ही है विच विल गोइंग टू मेक अ डिफरेंस. तो प्लीज ट्राई टू बी डिसिप्लिन, ट्राई टू बी एटलीस्ट कंसिस्टेंट. अगर मन नहीं कर रहा ना तब भी एटलीस्ट बैठ जाओ तुम उसके लिए. कभी ना कभी थोड़ा एक्सटर्नल फैक्टर से मोटिवेशन ले लो, 10-15 मिनट तो बैठोगे, उसके बाद अगर तुमको इंटरेस्ट आने लगेगा फिर वो तुम्हारी अगर हैबिट में एक बार जुड़ गया तो फिर तुमको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ने वाली यार. स्टार्टिंग में मेरे साथ में भी द सेम थिंग हैपेंड विद मी एज वेल. व्हेन आई यूज्ड टू गो विद द फ्रीलांसिंग फील्ड की यार मुझे मजा तो आ नहीं रहा, मेरे पास में कोई क्लाइंट भी नहीं मिल रहा, ना मुझे कुछ पैसा आ रहा, सिर्फ काम करे जा रहा हूँ, मैं सिर्फ प्रोजेक्ट बना रहा हूँ. बट क्योंकि मुझे वेबसाइट बनाने में बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि मुझे उसमें सीखने को मिल रहा था कि यार ठीक है यार इसको वेबसाइट चाहिए, इसकी मैं वेबसाइट बना दूंगा, क्योंकि मुझे अभी तक मैंने सिर्फ 2 प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, वो मुझे बनाने तो आते नहीं, बस ठीक है मैंने बना दिए हैं, बट नाउ आई एम मेकिंग एन एंटायर वेबसाइट राइट फ्रॉम द स्क्रैच. तो फिर अगर तुमको 1-2 बार उसको मजा आने लगा देन यू डू नॉट रिक्वायर मच मोटिवेशन. Sir, can you share your tech journey? Yeah, sure. Similar as of you, I started in that college first year. I started with the C++. I learned that language. I did a course of NPTEL back then. At that time, it was very famous. So for that, to check my knowledge, like how much I know in the C++ or in the OOPS concepts, I did that course. After that, I just bumped up to the DSA. I started learning DSA, and then after in the second year or in the third year, I started the freelancing. So I made it a mistake that I jumped onto the freelancing just right before the placement, so it affected my placements as well. But yeah, in the end, uh, I understand that it is always good to start either the early or to at least start something once you achieve the thing which you have started. तो या तो मतलब दो नाव में एक साथ पैर मत रखना, दो नाव में पैर तभी रखना जब एक नाव स्टेबल हो तुम्हारी. But yeah, the tech journey was very similar. I didn't get an internship in the college, so I started getting a directly full-time offer as an intern plus FT offer. It was in the Airtel. So I joined Airtel and did the internship there. And actually, I got two offers, but at the same time. So I go with that Airtel. And yeah, I joined them as a full-time first for a in just matter of few 2 to 3 months, I left Airtel and joined Amazon because I got that offer from Amazon. Will I get my onboarding date? It's been an year. I got selected. Kitna maybe possible your offer. I think I'm assuming that you got an offer from any company and your joining date is getting delayed. So yeah, it's an effect of the again, it's an effect of the recession. Maybe your joining date, the company was because of downsizing or the demand, they may be delaying up your onboarding or your joining date. So definitely you can ask this better more about your with your recruiter,
and if he or she is not responding, then you can expect like it might get delayed. So you can also search it out for other fields or other career aspects. So when I'm not able to build logic, I watch the solution. But when I retry that question after some time, I'm still not able to solve it. Okay, so this is the same question. So I answered you a bit before that. If you are not able to build up the logic, please give at least 1 or 2 hour to it. एंड अगर तुमने उसको इनफ टाइम दे दिया, 1-2 घंटे उसको डेडिकेट कर दिए, आफ्टर देन ट्राई टू बम जंप ऑन टू द सॉल्यूशन, बट एट द सेम टाइम उसमें अगर सॉल्यूशन तुमने देखा हुआ है, सॉल्यूशन तुमने देख लिया, तो वहां पे सिर्फ डीएसए पता करना है कि उसमें डेटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज हो रहा है, बस। देन ट्राई टू इम्प्लीमेंट कि अब इसमें ये डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है, अब मैं इसको कैसे लगा सकता हूँ। इन द वर्स्ट केस तुमको फिर इम्प्लीमेंट करना भी नहीं आ रहा, गो फॉर लर्न वॉच आउट द सॉल्यूशन, बट आफ्टर देन उसके बाद में ट्राई टू इम्प्लीमेंट 3 to 4 क्वेश्चंस ऑफ द सेम काइंड। वो सिमिलर क्वेश्चन जरूर लगा लेना। सिमिलर क्वेश्चन कैसे मिलेंगे? लीड कोड पर तुम कोई भी क्वेश्चन सोल्व करते हो तो उसमें सिमिलर क्वेश्चन अपने आप आते हैं नीचे, राइट? तो वो सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व ले सकते हो। जीएफजी पर अगर तुमने कोई सोल्यूशन, कोई भी क्वेश्चन का सोल्यूशन देखा है, उसमें नीचे सिमिलर प्रॉब्लम्स लिखी हुई आती हैं, तो उन सिमिलर से 2 से 3 अगर तुमने प्रॉब्लम लगा ली, तो वो वाला जो कॉन्सेप्ट है वो तुम्हारे माइंड में आ जाएगा कि लाइक इन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आई नीड टू अप्लाई दिस काइंड ऑफ एल्गोरिथम। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ सर्टिफिकेशंस कोर्सेज डू आई नीड टू डू? ओके, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, आई एम गेटिंग अ कॉल। ओके, ओके, जस्ट वेट। ओके, what kind of certification courses should we do? Rohan, for the certification courses I recommend you to do of your field, like अगर तुमको मिलता है कोई वेब डेवलपमेंट की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मिलती है, definitely you can do it. or if you are getting some, like in the code chef there is a, back then I didn't remember like if it is still exist or not, but when I was doing the code chef there is a certification program of that, like उसमें एक एडवांस लेवल का डीएसए प्रोग्राम होता था, एक बेसिक लेवल का होता था, एक एक्सपर्ट लेवल का होता था। तो डेफिनेटली इफ यू हैव अ गुड ग्रास्प ओवर ऑल द डेटा स्ट्रक्चर्स, तुमको सब कुछ आ चुका है, तो उसके बाद में तुम डीएसए के लिए, सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इफ यू हैव लर्न एनी लैंग्वेज यू कैन अप्लाई फॉर द एनपीटीएल सर्टिफिकेशन। इफ यू हैव डन द वेब डेवलपमेंट कोर्स, ऐसा कोई कोर्स कर सकते हो, वहां से यू कैन गेट अ गुड नंबर ऑफ course certification courses. But yeah, at least the most important thing, Rohan, which going to matter is how much knowledge you have on that particular tech stack, on particular thing you have learned. और अगर उस पर तुमने कुछ लाइव बनाया हुआ है तो फिर तो बहुत ही सही है, फिर तो यू विल आउटस्टैंड फ्रॉम अदर्स। like if you are a web developer I recommend you to try to do something in the freelancing field। अगर तुम्हें freelancing field में clients नहीं मिले, that is fine, you can make up the bit extensions। आज के टाइम में बहुत सारे extensions चलते हैं, तुम लोग वो बना सकते हो डेफिनेटली। और कैसे बनते हैं एक्सटेंशंस, वो 1-2 वीडियोस हैं यूट्यूब पे, लाइक हाउ टू मेक अ एक्सटेंशन, लाइक कोडिंग पार्ट सेम होता है in the extension। The additional thing is that you have to just add one JSON file into it with the description of your app, and if it has any criticalities then you should have to mention in that file itself। तो वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। Okay, thanks. Okay, please fill out the, yeah, everything. Yeah, please to let you know all, there is a link of the certification. Google form link has been already shared, so please fill out that link in, or if you want a certificate for this entire master class. Okay, please fill out that link if you want the certificate. And yeah, one really, I just a request with you all, so if you got some values, or even if you just get at least a 1 or 2 point which will help you in this, from this entire session, I request you all to kindly share it on the, on your social medias by tagging the AccioJobs or me, and I will definitely going to respond you there as well. Okay, so for the certificate you can fill up the Google form, and if you have any questions feel free to ask me. Otherwise we can end it up in just 5 to 10 minutes, I'll wrap it up.
Okay, is this totally free? Yeah, it is totally free. They will no one. They will not going to ask you any amount or any fees. Okay, so you can definitely fill out that form, and yeah, I'm just waiting for 1 or 2 more minutes. If you have any questions, then I'll pick it up. And yeah, please let me know like if I answer your question on the recession part, because right now every day I just got a lot of DMs key because of the recession they are not getting the invite, they are not, their resume are not getting selected, and they are not getting the online assessment link or the, you can say, the application link for that role which they have applied. So please let me know if I answered your question for the recession as well, because it is something ki recession is not in anyone's hand, and you have to find the other ways to sustain yourself, right? So yeah, definitely you can try out those ways. Even you can find out some other passive ways which are going on currently. There are a lot of passive ways to make some income, a good income to sustain in that meantime. Mm, Suggest me the best way to learn SQL in smart and enjoying way. um Devil Gaming, you can learn the SQL from YouTube videos, but the most enjoying and the smart way of doing it is there are certain platforms on the internet, like there is an um, Oracle supported website where they just ask you to implement all the queries that you write on the SQL. So the best way is to make a DB by yourself, and to make it a bit more interactive, like learn all those concepts from anyone from anywhere you want, like from either from the YouTube or from anywhere. But at the same time, whenever you learn any concept, like this is the joins concept in the SQL, then try to implement it. How you can implement it? There is a website of the Oracle, or there is a website, or even of the, I didn't remember that, it might be a tutorials point website, where they just give you an ID of where you just can make a entire table by using the query like create table, and where you can also make the primary key, make certain tables with your real life, like try to connect that table, like it's a table of your family. So these are the family members, these is the friend table, you have to join this table. So if you make tables connected with your own life, it will be very entertaining for you, क्योंकि वहां पे तुमने टेबल बनाया होगा, फिर जब तुम क्वेरी डाल के अपनी उस एंट्री को निकालोगे तो वहां बहुत मजा आएगा तुमको. Like for example, if you have just made a table of your family, you have just mentioned your age of all the family members, and you have picked की ठीक है, select this member which have where age is greater than of this and this, तो output देगा, then it will be very very good thing for you. Is there any YouTube channel for Learn DSA? Yeah, there are lots and lots of resources present out, Vishnu, for the DSA. You can definitely try any of them. Like I just want to say कि maybe possible the any channel which is good for you might not be the best for other. So it is again very subjective. So I recommend you to go with any channel you can start, and then if you are learning something from it, okay, that is fine. If you are getting all the things, go with that playlist only. But in case you are not getting the thing that YouTuber is explaining you, then please feel free to jump onto the some other channel. But yeah, please only choose the those channels which have an entire dedicated playlist. ऐसा ना हो उसपे सिर्फ एक वीडियो पड़ी है, बाकी वीडियोस के लिए तुमको फिर परेशान होना पड़ रहा है. तो try to pick up the channels which have an entire dedicated playlist. What about recession, Naveen? I already answered that question. uh, that recession, no one can explain you like till when it will continue, but I have suggested the ways. Sir, TypeScript is important for web because it is using in 19 yeah, TypeScript is the prerequisite once you learn the Angular, because Angular is completely based on the TypeScript. So yeah, but if you are learning React, then type you can TypeScript is something you can avoid, and because it basically mostly it depends on the JavaScript simply. But if you are learning Angular, TypeScript is a prerequisite.
I also have a same doubt. Is TypeScript is currently used by all? No, 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 not all by the IT companies. TypeScript is only those is only used by the companies which are either working in the Angular or they have a very dedicatedly need of the TypeScript. Otherwise, if any company is based out of the React, they will mostly be working in the JavaScript. How to apply for a job? Okay, Ajay is saying your certificate format have a problem. Okay, can you explain a bit more, Ajay, like what issue it has, so that the backend team will definitely have a look on it. Okay, Israelson is asking how to apply for a job. There are number of ways to apply for a job. You can go for the LinkedIn job section. You either can go for that, or you can have a look over the openings that usually employees of any IT industry put it out. And other parts is you can also join some telegram groups which actively post job openings, or you can also look for the Naukri or the Indeed, or there are a lot of other platforms on which there are openings. So yeah, try them all. Okay, so Ajay is saying the certificate design is collapsed. Okay, Ajay, I forward the same issue to the backend team, and definitely they will have a look. Okay, just giving one last minute. So if you have any doubts, feel free to ask. But yeah, again, I request you all, like, if you got any, if you have learned at least even not even a single point from this masterclass, it will really encourage me. It will be I'll be grateful to you all. Like if you just shared it on your social media platforms by tagging me or the AccioJob. So yeah. Generally, how many days? There's nothing, Karthik. Again, it's a very subjective question. How many days? Maybe a person can learn it in the 6 months, or some other maybe learn it in the 7 or 8 months. But definitely, it will at least take 6 to 7 months to master the entire DSA. Because once you reach out, once you start learning recursion will at least to solve at least 30 to 40 questions. It will take at least a month for a recursion to master. So yeah, same for that. You can say like in the beginning of the DSA, you can might be possible you can cover two topics or three topics in a month, but for the advanced, at least you require a month for every particular topic. The graph itself a very vast topic. Similarly with the DP, and similar case with the recursion as well. Siddhika, thank you, sir. Thank you so much for your time. Thank you so much for joining this session. Sir, can you please let me know the best way for a computational biology students as a data science? Uh, Vivek, I do not have enough knowledge regarding this computational biology student. But yeah, for the data scientist, I know ki no matter from which field you are, if you want to become a data scientist, you should at least know, you should have at least a good knowledge over the R. There is a language R, and there is a language, you should have a good knowledge over the SQL, the all the basically all the languages which you require to manipulate with the data, which usually required. And to become a data and similar kind of role with a data scientist, there's a similar kind of data analyst, in which we'll be going to analyze the data. So for that you also required a bit of Python as well, because all the machine learning organizations are currently working on that. And for yeah, for learning the SQL, there is an entire also dedicated playlist on the AccioJobs channel, so definitely you can check it out as well. Okay, so I'm just wrapping this session. Okay, one last question I'm taking picking about is, sir, can you explain your journey process in Amazon? Okay, yeah. So I applied for the Amazon as an off-campus, completely as a off-campus journey. So to be very honest, the same issue was happened with me as well. That I applied for almost more than 20 times for the same company for the same role. I applied, like for the software development engineer role, I applied for number of times. I The same situations happened with me as well कि मेरे पास भी लिंक नहीं आती थी, मेरे पास भी अपने ऑनलाइन असेसमेंट की लिंक नहीं आ रही थी, तो आई वाज आल्सो बिट फ्रस्ट्रेटेड कि यार कुछ हो रहा नहीं है, पता नहीं कैसे हो पाएगा. बट एटलीस्ट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी वंस कि एक बार मेरे पास में असेसमेंट लिंक आ गई थी. सो आई यूटिलाइज दैट अपॉर्चुनिटी अप टू द मैक्स.
So the entire process was of key. It was a software engineer role as a full time. So it consists of an online assessment round, three technical interviews, and one, you can say, HR round or the managerial round, because and one is of the bar raiser round, you can say. In the three technical rounds, it was a completely same, that it is they completely consist of the DSA questions. And in the end, they will ask you, in the last 5 to 10 minutes, they will ask you their projects, including the some tech stack in which you have worked on. Okay, so thank you so much all for your time. And since we are already, I already covered most of your doubts. I hope that this session was very, this from this session at least you get some knowledge, you get some, at least I was able to solve your doubts. And if this is the case, I urge you all to again share it on the social media platform. Might be I sound bit selfish, you can say, but yeah, at least in the end, I tried my best to resolve all of your doubts. So if your doubts are resolved, or if you have any other doubts, feel free to ping me there as well. And yeah, thank you so much for joining, everyone, and we are wrapping it up. Okay.